एबे फेर कणिया जोड़ी थिली। थैंक यू। पिलामानक विषय पूरा कंप्लीटली कहला गोटे पुओ फटोटा नाई बोली मुझे कहूनी एक्चुअली मो पुओ क्लास 9 रे पढ़ुची संतोष कुमार पात्र झील शिवानी सी क्लास 6 रे पढ़ुची मिसेस ना राजश्री। थैंक यू। 97 रे परा। ओके थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मु 89 रु पास कला परे टीटीपीएस रे गोटे वर्ष थिली। से एक्सपीरियंस रे मु एनटीपीसी काहलगांव रे जॉइन कली 92 रु 2012। एबे 2012 रे मु आसिल नवेम्बर रे आसिली एनटीपीसी कणिया जॉइन करची। आ मु सीएनडीएम रे अछि। मोर बाहागर 97 है मोर दुई पुओ गोटे पुओ बड़ पुओ जे 10th रे पढ़ुची सान भी 2nd क्लास रे पढ़ुची। मो वाइफ जे हाउस वाइफ एति। ओके थैंक यू एवरीबॉडी। मु जल्दी जीवी बोली प्रसन्न एनी क्वेश्चन ना क्वेश्चंस रिगार्डिंग फोटो देई ना हंती बाबू फोटो मु देई देबी सेटा ही गोटे इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल। ओके ओके थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट संजीव he wants to leave also at 4 o'clock again come back at 7 so he will just complete his introduction. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मु एठू पास कला परे 91 अगस्ट रे जॉइन करी बिरला टायर सेठी 2.5 मास काम कला परे कोल इंडिया रे अपॉइंटमेंट पाइला परे सेठू नवेम्बर जॉइन कली। सेठू मोर पोस्टिंग हेतला एमपी रे एससीसीएल बिलासपुर हेडक्वार्टर 3 वर्ष सेठी काम कला परे तापरे सिस्टम मु जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कैडर रे काम करतली से कैडर चेंज हला मोर सिस्टम्स को दैट मीन्स आईटी सेक्टर रे मु वर्तमान 1995 रु बर्तमान जे काम करछि एमसीएल तालचेर एरिया रे पोस्टेड अछि। मोर दी पुओ ऋतुराज क्लास 9th रे ज्योतिराज क्लास 3 रे। माय वाइफ इज ए हाउस वाइफ। एनीथिंग मोर प्रसन्न एनी क्वेश्चन? ओके थैंक यू। अटल थैंक यू। अटल can I get the electrical slides please? Electrical slides. इलेक्ट्रिकल भाई माने समस्त आसी तो अशोक पंडा टू स्टार्ट विथ इज ही हियर? ओके बाणी नथिबो बाणी काई बाणी सोबन पाखे अच्छी। ओके ओके सो आमे इलेक्ट्रिकल को जीवा टिके इलेक्ट्रिकल सीरियल नंबर 35 अशोक कुमार पंडा। अच्छा अशोक आस टिके भाई मैंने पास कला परे मु 90 रु 99 बीएचईएल बैंगलोर रे थिली। 99 परे नीलाचल इस्पात निगम रे जॉइन करची। वर्तमान मु पावर प्लांट को हेड करूची सेठी। आउ 95 रे मैरिज हेतिला हैप्पीली मैरिड। आई एम मैरिड एंड माय वाइफ इज हैप्पी एंड आई हैव wife is also married.
I have 2 daughters. टू डॉटर्स बड़ झी बर्तमान क्लास 12 रे अच्छी गलाबे मारे भाई साना झीटा क्लास 3 रे पढ़ुची एटा कौन भूल भाल अच्छी नुआ फोटो कहीं दिया है चले देवा तो एटा क्राउन रो फोटो क्राउन रो गेट टुगेदर रो तो प्लीज मैनेज विथ अस फोटो ना ना मो स्त्री रो मु भगवान के नारे शपथ करी कहूची यही गोटे कहीं मोर स्त्री आ गोटे यूसी रो एक्सपीरियंस हिसाब रे सेतेबेले आमर सब राउरकेला भाई मैंने से सब जाती प्रति सप्ताह थरे लेखे जाती तेणु विदाउट टिकेट रे जाती आमे थरे 3 जण ब्रेव लोक बाहरलु अशोक कुमार पंडा ताराशंकर दलई आउ सरोज महापात्र कहले से समस्ते जाऊँ तांकरी संगे आमे पलैबा आउ अनफर्चुनेटली से माने कौटी बसिले आमे आउ ताकू देखि पारलुनी तेणु गोटे जगार आमे बसी पड़लु सेठी मझिरे जेतेबेले झारसुगुड़ा स्टेशन पाखापाखि किए कहले आज मजिस्ट्रेट चेकिंग अच्छी तापर आमे खोजिलु कौटी टिट्टी मिलिबो आमे ताकू फाइन देई टिकेट 3टी करी बसिलु तापर टीटी को खोजी बाहर कलु ताकू आमे टिकेट नाई तेणु आमको फाइन पकई आमठो टिकेट से करेला तापर आमे राउरकेला गलु थैंक यू वेरी मच अशोक पंडा इज साइलेंट जोकर मोर एक्सपीरियंस अच्छी ट्रेन रे जस्ट 30 सेकंड्स लगे ये कहले ट्रेन रे से टिकट करके गले 4 इयर्स मो दिने भी टिकट करनी आ मोस्ट ऑफ द टाइम जब ब्लेजर जो दिन मिलगला ट्रेन रे गले 40-50 टका इनकम हो जाए समस्ते भाई टीटी भाविकी आज्ञा 8टा रखी आज्ञा 2टा रख ओके 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 कहीं धरिक आज 30 ରୁ 40 टका मिनिमम मिले 15 मिनिट रे एंड 4 इयर्स दिने भी मुझे टिकट करनी ओल्लैबू से बस रे भी टिकट नुह जयपुर को जाऊ टोटल 2-3 टका थी गोटे सिगरेट टाणीदे सरला ओवर एंड यू आर एट होम आज कौन आणीनु सीटा से जैकेट आज ब्लेजर टा नहीं अशोक आ प्रसन्न दीटा जाक डिफरेंट लाइन रो पंडा एकदम हौ पंडा अच्छा ठीक अछि भूषण हाँ भूषण कहूँ तुम पाखे अच्छी आउ यही भूषण माने आमर मोर स्टार्ट होता कैरियर जो यूसी रु टिके छोटिया छोटिया कथा बहुत अच्छी तो बहुत इमोशनल हो पड़ो एनीवे एटा सन्देह हवा कि हो ताले तो एमती एमती आज गोटे मन पड़ुची माने मोर ये माने फैमिली भी जड़ित थिला मो सान भाई दिने आसी बुर्ला को आम सब किसी पिला मिसिकी जाइचु रेमेड रे बसचु एमती इमोशनल है सी कहला मो भाई को किए रैगिंग करुची मत गोटे स्टेनगन आनिकी दियो तो आज से ही दिन मो सान भाई को ये जिते पिला अच्छा समस्ते डाकती यार तो स्टेनगन भाई कहीं तो से दिन आज पुणी मन पड़ जाऊँगी आ गोटे छोट कथा थिला आमर जो कौटा से कोला जो कोलारे किए मिसई देथिला हम भाई माने रमा भलिया किए थिले नहीं रमा थिला कि किए ये थिला बोधे नहीं बे नव महांती कि किए गोटे थिला एनीवे छाड़ एमती होइथिला तो आ गोटे पुणी आ गोटे थिला कोन एमती इन्स्टिगेट करिकी थरे से पुणी से आम सान भाई आसुची रास्तार अच्छी आमर पीसी ब्रिज पाखु आसिकी आम हॉस्टेल पाखापाखि न्यू हॉस्टेल पाखे देखला बेलू से आमर ये थिला मनोज सिंह सी गोटे ग्रुप सहित कथबार्ता हो अरे देखो साला बानी जैसा अच्छा लड़का उसको साला पंडा ने फंसा दिया सी टीटू कहला अरे भाई तोते एमती कहते पंडा कौन फसईदेला मो सेठू मन पड़ा मेस सेक्रेटरी होइतलु आमे तो 2 जण मिसिकी तापर पंडा से दिन पंडा मन अच्छी मेस सेक्रेटरी दिन और सेटा जो चश्मा पिंधिकी संबलपुर रे सुना जो घर आनी बिकिकी फाइन टा देले सेगुड़ा मन नहीं बोलते अल्टीमेटली एमती है रेट टा मेस रो समस्त को अधिका पैसा देवा पड़ा पुणी डिसाइड कराला जे आमे फाइन देकी पुणी रेट को कमेबा मिल रेट जोटा थिला तो पंडा घर सुना केमती चोरी कला सेटा गोटे बड़ एपिसोड अच्छी एनीवे तापर आनी बिकवाटा सी आहरी गोटे होगा तापर बिकिदेलु जे तापर सांगे सांगे पंडा कहला चल एत पैसा मिललानी तो खाईदेवा जाए पुणी खाईदेलु देख पुणी सटेदेला पैसा तो
तो एमती रे लाइफ रे आमर चली जाइए फिल्म देखी खाई पी बहुत मस्ती मजाक रे चली जाइए तापरे मजाक पर पर आम आसिलु जॉइन कली मुठी ओईसी रे ओईसी रे भी सेमती मस्ती करी गोटे घर फर नहीं रहिलु से भितर मोर स्त्री सांगे से माने मो स्टूडेंट थिला से टाइम रे तो स्टूडेंट सांगे लव है ताको बाहाई गली कौन मु एटा जानी 99 तागुरु लव हो सारी 100 जगह सक्सेसफुल है तागुरु बुर्ला रे थिला बेले संबलपुर प्राय एवरी अल्टरनेटिव झील सहित 2 मास लव हुए वंस 50% सक्सेस याडू 50 फुल सक्सेस सेपटू 0 कंप्लीट एवरेज 50 सेटा भूल कहूँ एटा मोर फास्ट लव थिला और एठी मु सक्सेस है तो भूल कहूँ सेटा हमको तो भकुआ बनौतलु ताले अच्छा ठीक अच्छी तापरे तो से ओईसी रु कैरियर आरंभ होला हमर से रमा भी था आम सागर से कॉलेज रे आम पाठ पढ़ाऊँ दी जन से गोटे बुलेट थाए ग्रीन कलर धरिकी बाहर से कॉलेज रे सब झील ता पछरे गुड़ाती मो पछरे किए आसते अच्छा ठीक अच्छे तो एमती है अल्टीमेटली तापरे आम पुणी स्टेट गवर्नमेंट को आसिलु जॉइन कलु है बर्तमान मु तो मिसेस कथा कहली सी भी गोटे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ओईसी पास करथिला इनिशियल पार्ट रे से जदियो लेक्चरशिप जॉइन करथिला एबे सी इज राइट नाउ सी इज हाउस वाइफ आउ मोर गोटे पुओ अच्छी ता ना आयुष्मान गुड्रू ताको स्नेह डाकुचे आम आबे आउ अधिका बढ़ेबिनी मुझे सब्सिक्वेंटली जिते स्टेट गवर्नमेंट रही तापर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफिस रु कैरियर आरंभ करी धीरे धीरे ग्रेजुअली लास्ट 2टा टेन्योर रे मु अनगोल्ड थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पंडा से थिला जिंदल रे 2 वर्ष कटिला परे एबे मु ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट रो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अच्छी आ मोर काम है लोक को सर्विस दवा पावर पावर फाइनाली आज तो समस्त देखा गोटे कथा मन पड़ू गोटे विच्छेद रे दुख नहीं सुख मन पड़े आज पुणी आम समस्त अलग हो आज गोटे कथा समस्ते टिके छोटिया गीतटे गाइबे मो संगे मुझे रिक्वेस्ट श्योर 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 ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे यूसी अरे ग्रेट ग्रेट बाणी सबू सेंटी कर देलु अनिल कपूर विभू प्रसाद पाणिग्राही नेक्स्ट चंद्रमणि सेठी प्रोफेसर विभू प्रसाद पाणिग्राही एठू पास कला परे चाकरी बाकरी किसी नथिला एठी एमटेक कली पुणी 3 मास जॉइन कली तापरे जॉइन कली एफसीआई फर्टिलाइजर रामागुंडम सेठी रहिली 2 वर्ष 2.5 वर्ष रहिली तापरे गली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन तापरे स्विच बैक टू एकेडमिक्स आईजीआईटी सरांग को आसी रहिली सेठी वर्तमान प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छी इन द मीन टाइम एमटेक पीएचडी सब सारी आईआईटी बॉम्बे एमटेक आईआईटी खड़गपुर पीएचडी आ बर्तमान चलती सेमती स्पोटरे पुओ अच्छी गोटे पुओ धीमान पाणिग्राही ना 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 क्राउन रो देवाशीष से बर्तमान क्लास 7 अच्छी आ मिसेस हाउस वाइफ आउ कम्प्लीमेंट टू मी माय पर्सनालिटी मेनी अदर वे सी इज बेटर देन मी एति चलती लाइफ चलती ओके वी मे थैंक चंद्रमणि तापर देवाशीष तापर देवाशीष हेलो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी माय सेल्फ चंद्रमणि सेठी जानी अच्छा हो ठीक अच्छे पास कला स्टाइपेंड इंजीनियर जॉइन कली टीटीपीएस रे थर्माल रे तापर गोटे वर्ष पढ़ला पर नेक्स्ट आसली चिपलमा पावर हाउस रे चिपलमा पावर हाउस रे 18 वर्ष रही 18 वर्ष आसला नेक्स्ट आसली बुर्ला पावर हाउस 3 वर्ष ए प्रेजेंटली मो अपर इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मैनेजर मेंटेनेंस रे अच्छी आउ सेटा मो धर्मपत्नी मंजू झील सुचित्रा से पढ़ुची बुर्ला रे
ये सत्यसाई किड्स एब्रोड रे क्लास 10 रे आउ पुआ उदित उदित से डीएबी एमसीएल रे क्लास 3 रे पढुची सेतिकी आ गोटे टाइम दे गोटे मोर एक्सपीरियंस कहबी यूसी रो गोटे इवेंट आफ्टर यूसी परे टाइम दे बोले कहबी जस्ट गोटे छुटिया कथा रे जस्ट इंजीनियरिंग पास पर गाँव रे थिली गाँव रे थिला टाइम रे गोटे असुविधा हला मो मेडिकल काम जहाँ जणे तो मेडिकल असुविधा हला से आसिले बुल्लार एडमिट हेले आसला पर ताकू ए करने आम स्कूटर आसिलु 2 जन गाँव आसला स्कूटर नंबर प्लेट नाला संध्यारे गाँव बाहरलु पहुँचलु एक लाल ढाबा जोटा आप कटापल्ली अच्छी से पाखापाखि खाइलु टाइम राति 12टारे आसलु स्कूटर ठंडा दिन डिसेम्बर मसरे तापर आसला टाइम रे जस्ट आम स्कूटर आसुचु गोटे गाड़ी जीप आसला जीप आसिक ये कला कंटापल्ली पाखापाखि ओवरब्रिज पूर्वर आम रुकेला कहला तो रख रख रखला मुझे देखली साइड कली जैकेट पिंधि गाड़ी भर्ती मुझे भाविली तो ये चोर डकायत तापर मुझे दबेली गाड़ी एक्सेलेटर दबेली स्कूटर को जोर सीधा पहुँचली ओवरब्रिज पाखापाखि गाड़ी आसला जीप जोर दौड़ी आसला तापर जो गाड़ी जोर आसला ब्रेक देली ब्रेक देलापर तापर जीप आगे पलि गला पर मुझे देखली जीप रे बस पुलिस गन फन धरिकी बस तापर सागे सागे ब्रेक कली स्कूटर को पुणी पिछा गला गाड़ी मो पछे पुणी से सीधा कटापल्ली गली से लाल ढाबा पाखे आ मो रास्ता नाला कम करी मुझे देखली पुलिस कि मो पाखे ड्राइविंग लाइसेंस नाला बाध्य मुझे ब्रेक कली जोर रे आउ मोर एक्सीलेटर बाकी नाला फुल दबेली फुल दबेला तापर लाइट ऑफ करदेली गोटे होटेल ढाबा जो पान दुकान थाए पान दुकान रे रहीगली साइड रे रखीदेला सागे सागे आसी पुलिस आसिक मो गाड़ी फाड़ी चेक कला देखला बाड़िया आरंभ कले मुझे गोटे कथा जस्ट कली यूसी ना धरला सागे सागे रहीगले तापर ना तुम्हें चल बस मोर जो पाखे जाते बसले जीप रे से छाड़ी पलि आसे मुझे गाड़ी एका स्कूटर आसले रात 1टारे बुर्ला थाना को बुर्ला थाना आसला पचारे तुम प्रिंसिपाल के ना थे भी विजय रावण एमती कहले जहाँ हो या गोटे एक्सपीरियंस यूसी ना रे आज मुझे एक्सपीरियंस आपको जनइली आ गोटे एनादर थिंग गोटे खुशी कथा आज आमर मैरेज एनिवर्सरी जोटा मैगना सांगे था आम सांग मांगे आप साइज करोचे आम हैप्पी ग्रेट ग्रेट वी मे गिव बेस्ट थैंक यू नेपाल साहू आसी ना बोधे is the only fellow who loves us more than her wife, no ki? Unlike others. 1989 रु वर्तमान पर्यंत जहाँ भी ताकू जस्ट समराइज करके 2-4 लाइन कहूँ भसा मेघ मुझे भासी जाए दूरे नील आकाशर मथा छुई रे आहा से दूर पहाड़र चूड़ा छुई रे नाचे झुमी झुमी रे नाचे तिंता तिंता तक धिनकता एटा हला सबुर समारी आउ उपलब्धि कहया गले बेसी किछि नाही स्टिल ट्राइंग हार्ड टू सक्सीड आउ वर्तमान पर्यंत जेतिकी मिलछि बहुत खुशी सांग मानकर सांग मिली से खुशी फैमिली मिली से खुशी मो वाइफ जन हाउस वाइफ आई हैव 2 सन्स बड़ बर्तमान क्लास 10 आईसीएसई अपेयर करा जाऊँगी सान इज इन क्लास 4 एठू पास कला परे बहुत किसी अपहेवाल पर फाइनाली ओएससीबी तापरे कोल इंडिया तापरे कोल इंडिया छाड़ी की एक्साम रे एमबीए पर स्विचिंग टू अनदर लाइन माने मैनेजमेंट कंसल्टिंग फील्ड को सेठी 2-3टा प्रोफेशन चेंज कला फाइनाली मो वर्तमान 2007 रु आई बीन विथ गोटे मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म अच्छी प्राइस वाटर्स कूपर्स से अच्छी दैट इज माय लाइफ टिल नाउ ओके थैंक यू नेपाल चंद्र साहू नहांती बोधे प्रदीप देव नहांती प्रशांत रंजन दास नहांती ओत्ता साहब ध्रुव अच्छी ता ना लास्ट रे लिखी ध्रुव आउ देवाशीष रथ आउ ध्रुव आनंद पूजारी भाई माने
ମୁଁ एक्चुअली कॉलेज रे जेतला पढुଥିଲି मते लागुला संबलपुर आड़े सब पिला आइछन संबलपुरिया कथा कहीं नहीं शिखबे तो एतिले प्राय समस्त संबलपुर रे कथा होतिले एबे भी संबलपुर रे कहू जायतिले तो से पुराना कथा मने पकावार लगे जय मां सोमेश्वरी की जय तो गोटे छोटिया इनसीडेंट खाली कॉलेज रे कहबे तापर फैमिली बाबद रे कहबे कॉलेज में पहला आसती एडमिशन फेडमिशन सरीगला से काउंटर सामने पहला मासर फीस देवार लगी ठिया होती तो जिते मोर पाली आसला क्लार्क कहली सार मोर केते टका कहून बोली पछपट गोटे जावड़ा पड़ा ढो बोली गाल देखिली किए सीनियर पिलारे अब साला क्लार्क गोटे को तू कौन सार कहू तू कौन साला इंजीनियर हो काली पूरा गोटे एसडीओ हो गोटे पोस्ट होल्ड कर एसडीओ होगी पास कले तू कौन साला एमती कहू काल एम तुम्हें दाम कर कथा आज शुणली बोले आहरी बाड़े तो से जो एक्सपीरियंसटा कैरी करी से मो सर्विस लाइफ बहुत कम आज पर्यटन मुझे जगह रही मोर सबू जगार वर्कर मान भल रिलेसन रही एंड दे आर ओब्लाइज टू मी बर्तमान पर्यटन आई एम इंडिस्पेंसेबल इन ऑल माय पोस्ट बर्तमान भी हेड ऑफिस अच्छी दे आर नॉट विलिंग टू लीव मी जो पार हाउस रही दे आर नॉट विलिंग टू लीव मी आज पर्यटन इंडिस्पेंसेबल रही खाली से गोटे टीचिंग यू आर इन ओएचपीसी नाउ आई एम इन ओएचपीसी आउ बाहागर तो है हबार इच्छा नथिला को बाबा लोक बा हवा को चाहू नथिले बाहागर है ओ झियोटे भी ठीक तापरे आउ चाहू नी 5 वर्ष पर आउ गए पुओ भी होगा झीटा 11th क्लास में पढ़ुची भल भल पाठ पढ़ुची पुओटा भी 5 क्लास में पढ़ुची भल पढ़ुची आउ मिसेसटा तो मिसेस भी चाकरी कर भुवनेश्वर बर्तमान भुवनेश्वर अच्छी भल आराम अच्छी फैमिली आराम अच्छी थैंक यू शोभन साहब Good afternoon, ladies and gentlemen. Sorry. It is very unfortunate जे आमे केते झियो पिलां संगे पढ़ुथुलु मने पड़ुनी किंतु ए बॉन्डिंगटा आमर फेविकल बॉन्डिंग थिला बेले ताकर को बॉन्डिंग आमे जाननु आमे ताक मिसई पारनु very unfortunate anyway Avinash thanks for arranging take care next time we will bond with them yeah because they have, now also they are having a family तापरे लंच टा वेरी डिलीशियस होता थैंक्स फॉर टू द ऑर्गेनाइजर एंड जिनसा फैमिली कौन आम समस्ते वेरी सीरियसली वी आर इंट्रोड्यूसिंग इच अदर अबाउट द फैमिली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन वी आर स्टडिंग दैट वाज अ लार्ज फैमिली स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग नाउ हियर वी आर विथ अमंग द फैमिली आम जोटा इन फैमिली कहीकि भावुँ पिला छुआ संसार दैट इज नॉट द फैमिली यही आमर संसार हूँ यहीटा 25 वर्ष पर जदि आम यही फैमिली बॉन्डिंगटा रखीचु कहीं जानी ना तुम आज तुम जहाँ प्रेस कर एप्रिशिएट कर काली से थाई पारे न थाई पारे तुम थाई पारे न पारे फैक्ट हैंड किंतु यही फैमिली रहिबे निश्चय रहिबे एटा आहुरी केमती मजबूत हम से आम चेष्टा करिबा अच्छा डू एग्री पंडा से कहीं बहुत छोट पिला बस आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस मोर तो गुड़ाई आड़े फैमिली अच्छी मु कहार फैमिली फोटो देबी so that's how he has not given any photo सबु आड़े अच्छी किरबार आराम करी पाठ पढ़ला आराम करी आम कहूँ से आर्ट ऑफ मेकिंग अ फैमिली कोड शिखिलु ईस्ट हॉस्टेल मन अच्छी केसी पात्र आमको जो से छड़े देते समस्ते ये भद्र हो समस्ते ये भद्र अप्रिय सत कहूँ समस्ते भद्र हो किंतु से ही भद्र पिला पाठ पढ़ी
पाठ पढ़ु नथिले जदि पाठ नथिला ना फैमिली केमती मेक करिवो कोठु आम शिखिलु से आर्टटा आज कहूँ आम 3टा पिला काली हूँ कौटू शिखिल से कौटू शिखिल ना नहीं सत कथा ना नहीं एने समस्ते बहुत भद्र हो जाइए ना आम पिला अच्छी सी अच्छी विजय कही जे आमे एइठु सेगुडा शिखिचु बोली बस विजय कही राइटली विजय टोल्ड यस राइटली विजय टोल्ड दैट डे आई डोंट फॉरगेट केसी पात्र जो आसी हठात कला समस्त रूम को ए साला टिमो शंकर यंग पढ़ुले कौन कौन पाठ पढ़ुले सब छाड़ी दौड़ी मन पड़ुची सेटा सेठी सेठी कौन भद्र लोक आम नथिले रमा कौन कहूनु चला डे तू घर आसीलु आम तो हॉस्टेल देखु तू घर आसीलु एने भद्र कौन देखी होच एनीवे मु पास कला परे ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन ई थर्मल 7 वर्ष रहिला परे प्लानिंग सेल आसिली प्लानिंग सेल फैमिली प्लानिंग नो ओनली प्लानिंग सेल नहीं सेठी केते फैमिली रमा पचरची कोडी ईबरे सेटा आई डोंट सुने एते सीरियस मु माने हेई कोड कोन हेई तो कि मन रख परबो सेटा रातिरे मेक इट क्लियर ओके कहना एटा गोटे फन सेशन हेउ नतला खाली गोटे सीरियसली इंट्रोड्यूस मोर पिला छे पिला केही कार नो संसार भाई जेते जा को केही कार संसार नो एही सांग माने तमरो कांद उठेबे सुनिले आसले यही सांग मैंने आसवे आम पिला मैंने केते पड़े जाइछंती तुम देखैथल लेट जीवा तो मुझे सी जब साउथ हॉस्टेल देखियो तार ना स्मरण आमे भी देखियो आम फैमिली केन पड़ी ग्रेट ग्रेट तापरे प्रेजेंटली आई एम एजीएम इन एसएलडीसी ग्रिडको आउ माय फैमिली साइज स्मॉल मोर गोटे सन एक्सपायर कर जाइतला मोर एने डॉटर +2 सेकंड ईयर फाइनल बीजेपी कॉलेज जो कहलु तो फैमिली बड़ एबे कहजु फैमिली छोट कोन ना नहीं फैमिली माने सुना लीगलाइज फैमिली अलगा ये फैमिली अलगा भाई इलीगल फैमिली बड़ सेटा तो इलीगल फैमिली बड़ बहुत बड़ ना लीगल फैमिली छोट छोट सुना एथरे डेंगा क्वेरी मोरी कले मते फेर बैक करियाम पड़ो बहुत टाइम नहीं हैला No query, please. Okay, thank you, Shobhan. Height of philosophy. Shobhan, you are really great. Thanks for educating us. Venkat Patnaik, please. Everybody is a father because of Shobhan. Shobhan and Rama. Because What Rama are so wonderful things, yes. एकदम फैंटास्टिक उठी पड़ले शोभन कथारे रमा मु मधुआ कला शोभन भाडुआ कला समस्त को नमस्कार 3 cheers to UCE 89 batch 3 cheers to UCE 89 batch hip 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 बहुत बहुत धन्यवाद यही जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराई ये जो मीट ऑर्गेनाइज कराई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि या पूर्व 2टा मीट बोधे भुवनेश्वर अटेंड माने भुवनेश्वर कराई थिला ताको मु अटेंड करि पार नथली बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस आउ यही मीट टाको मु मिस करिया चाहू नथली तथापि एमिति गोटे मीटिंग टा थिला ताको मोर अटेंड करिया थिला तो सेति पे मु टिके डेरी रे कंफर्म कली से मु थैंकफुल आम अशोक पंडा और विभू भाई एमाने मते 2-3 थर बारंबार फोन करी कहिसंती तम प्रोग्रामटा कौन हला तमे आसुचन नहीं यू आर सपोज टू कम एंड यू मस्ट कम तो जतले मोर प्रोग्रामटा फिक्स हो गला एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी दैट ए 2-3 दिन निश्चय फ्री रही देन आई कॉल्ड विनय मु कहली भाई मु आरभी पटनायक कहूँ तुम चिन्हुच ना मु कहि परिबिनी बट आई एम 1989 बुर्ला बैच इलेक्ट्रिकल एंड आई वुड लाइक टू जॉइन से कहले निश्चय प्लीज फ्रेंड्स कम दिस वे आगो को पळे आसतु से जे आश्चर्य पो झियो माने समस्त आगो पळे आसतु हम प्रोफेशनल लाइफ प्रथमे कहूची प्रोफेशनल लाइफ रे 1990 रे एनटीपीसी रे जॉइन कली देन एनटीपीसी हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू रोम थ्रू इंडिया प्रथमे साउथ रे चाकरी कली रामगुंडम रे तापर नॉर्थ रे दादरी आ दिल्ली नोएडा से जगह
सर्विस कली देन आई केम टू ईस्ट नॉर्थ जाक कहती माने बनारस सिंगरौली रिहान नगर से एरिया चाकरी कली तापर बर्तमान मु लास्ट 4 इयर्स है भुवनेश्वर रे बेस्ड एनटीपीसी रीजनल हेडक्वार्टर अच्छी से एडिशनल जनरल मैनेजर ऑपरेशन सर्विसेस रे सर्विस अच्छी लुकिंग आफ्टर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ तालचेर थर्मल एज वेल एज तालचेर कणिया आईटा हूँ मोर प्रोफेशनल लाइफ आउ पर्सनल लाइफ रे तो एका अच्छी आउ टिल टुडे आई एम एलोन can you ask some questions regarding that? I think some of our students, means our UCEans have come. ना समस्ते एते सीरियस काहे हे गेला No, not for किछि that. दिन पर जो मु फोटो देखेबी सेई फोटोटा देइनी मु सेइथरे आई हैव गॉट ए वाइफ नेम्ड एज पुष्पा पुष्पांजलि एंड डॉटर श्वेता पटनायक prettily called as Megha, studying in standard 12, and Adarsh Patnaik son, prettily called as Papun, studying in standard 10th. So दी जन डीवी पोखरीपुट रे पढुचंती सॉरी कि मु फोटोटा देई पारलिनी नेक्स्ट मीट रे नेचुरली सी फोटोटा आपण देखियो को पाइबे In a lighter vein, he wanted to tow Suresh. So Suresh कहला बेले केही सीरियस नथिले काहे सुरेश को समस्त जानि चंती से आप रे अछि बाबा हिची भेंकट जे बाबा है तो अधा विश्वास कर पारे भाविले अरे सत्तरे भेंकट कुआडे गला some of our friends are there I think can you give us some time because we are having this private session maybe at around 5:15 if you are here we will be closing it okay can you request you to be in the canteen or somewhere by 5:15 you please come sorry we have given you a time and we are not keeping it okay thank you so much Venkat मु जानी अटल आम पाइबा कि सार मानकर सौम्य दर्शन पट्टनायक सार मिलिबो कि अखिल सौम्य दर्शन पट्टनायक सार मिलिबो देखिल गैलेक्सी इलेक्ट्रिकल ले नब नाही सीरियल नाही आज आछंती ओके देन विल मैनेज विथ ओनली सौम्य स्टैंडिंग इन द पोडियम Hello, after hearing Sovan, I'm scared to talk about my family. Anyhow, Sovan, you are great. I got married in 97. My wife. He has redefined family. That's that's what philosophy. I said. That's what I started with. That I'm scared to talk about family. Philosophy, Sovan talking about family. Will it be Sant Rampal? Sant Sovan Lal? In 1997, my wife's name is Twinkle Patnaik. She is running a school, and mo dita puo achanti unfortunately. One class 7th, one class 5th. Jonaka now hochi Anvesh Patnaik, aura now hochi Devanshu Patnaik. Fortunate part of it you want to know. It is unfortunate. Because I didn't have a girl. And then it's great. A gender bias was with us, I think, girl, boy, so he's unfortunate that way. And as far as college experience is concerned, fabulous, many experience to share. But more a technical question for this technical gathering. Amaro prati week re mangso diya uta dithara, if you remember. Eto bada handi re se serve kortula. Se gote chota maribo, only 4 pieces used to come. And throughout my career of 4 years, it has never been 1 piece more. It has never been 1 piece less. Ei pakar Six Sigma action mu to kebe dekini. Sovan has a solution for everything. From campus interview, I joined Tata Refractories ko. I was so thin, na? One in one page. Soumya and Sovan in one page. Yeah. Soumya. Then I joined Tata Refractories, and from there I joined a company called as Vijay Electrical. I head the vertical which is called as the power evacuation. That's all. Thank you. Much. Anand.
आनंद पुजारी ता फोटोटा निशटा बहुत मोटा थला टिके खोजले मिल जिवो जे ମୁଁ ଦେଇଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ବି ଦେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ। फैमिली फोटो सार देइथिले अखिल देखिल एथर ए सिल्वर जुबलीटा मु मिस करवा लगी चाहू नथिली सेतला एटा गोटे मस्ट एटा गोटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी कि माने मु जानी कि बहुत लोक आसबे 70 80 केते आसंती अविनाश अराउंड 76 हां हमर किंतु 200 ऊपर थिले तांको भी एक्सपेंड करी कि तापरे माने हमर गोष्ठीटा बढ़िवा कथा हला लोक निहाओ गोल्डन जुबली लगी टाकीचु हला। अच्छा ताले मुई एक्सपीरियंस कहूचे हमर यूसी बुर्लार हमर थिला मोर काम थिला कस्टमर सर्विस माने मु कोन करथली जे जहाँ डिमांड कला जेमती मोर गोटे गोष्ठी थिले से माने समस्त कहबे परीक्षा सरला परे किरबारे टिके पी दवा हांडिया तो जैसे एग्जाम खत्म हो जा रहा था बंदे आ जाते थे और किरवा जाके हमको पी के सो जाते थे है सेटा है गोटे कस्टमर सर्विस ग्रेट आउ गोटे कस्टमर सर्विस थिला माने समस्ते आसिक डाउट गुड़ा पचारुले आउ से मो रूम सामने भिड़ होता आउ सेटा खाली इलेक्ट्रिकल नथिले इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिकल भी मेकानिक्स तो से एक्चुअली मु समस्त को धन्यवाद दूची कि मु सही टाइम रे एक्चुअली पढ़ेले आपण बेसी शिखिबे पढ़िले बेसी शिखिबेनी तो ये 4 इयर्स जो थिला सेथरे मोर परफेक्शन आसला तार सबु मेकानिक्स हैला ए 4 वर्ष रे मोर परफेक्शन आसला तापरे परफेक्शन टा जीरो हो गला एबे नाउ आई एम ए बिग जीरो आई एम डूइंग कंसल्टिंग एंड व्हाट वी डू इज नाउ आई एम वर्किंग इन Hewlett Packard and I do supply chain consulting services. So I am responsible for ensuring that HP Hewlett Packard deliver products of right quality and on time and least cost. So I do consult whole supply chain of Hewlett Packard sitting from India. There are 100 people working under me. Great, great, good. Thank you, Anand. Family photo ta dekhe nahi. अच्छा अच्छा ओ सॉरी मोर फैमिली मो वाइफ संबलपुर आउ से हाउस वाइफ आउ झील अच्छी 12 क्लास पढ़ी समस्त झील पुओ बोधे 12 क्लास पढ़ुंट 10-12 भितर मो झील भी अच्छी तार तार माने पढ़ा भी भल से करे तापर तार मॉडलिंग भी बेसी करे बापांगर टिके अच्छी तो कॉलेज ना ना मु मॉडलिंग करनी लीड करवा आ मो पुओटा से 3 क्लास पढ़ुचे so you are in Sambalpur no I am in Bangalore हाँ okay. So rightmost is my wife and then Varsha that is my daughter she is in 12th standard and son is in 4th standard अविनाश भाई एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ इनके बारे में क्योंकि हम लोग कॉलेज में जब थे तो बदमाशी बहुत सारे करते थे दिवाली के बाद जब घर से आने के टाइम में हम लोग बम लेकर के आते थे और हम लोग का सबसे अच्छा काम क्या था जब सेमेस्टर के एग्जाम के टाइम में पूरा हॉस्टल पढ़ाई कर रहा है उस टाइम में रात में 9-10 बजे एक बम निकाल के फोड़ देने का और जल्दी से डोर बंद कर देने का फिर सब लोग निकल के कॉरिडोर में टहल के देख रहे हैं कि क्या हुआ सब निकल के बाहर आ गया तो सबका जैसे कौन बोला प्रसन्न पंडा बोल रहा था ना कि सबका पढ़ाई डिस्टर्ब करना हम लोग का काम था तो एक बम मार दिया आधे घंटे के लिए पूरा हॉस्टल में हंगामा चालू हो गया तो तरह तरह का बम लेके आते थे एक बड़ा वाला बम एक पतला बम आता था चटाई बम पतला वो बहुत काम का बम था तो एक बार हम लोग प्रोग्राम बनाए ये आनंद पुजारी हमारा नेबर था तो हम लोग प्रोग्राम बनाए हम लोग संबलपुर जाएंगे पिक्चर देखने के लिए ठीक टाइम पे इनको पता नहीं क्या इंटरेस्ट हो गया रूम बंद करके अंदर चले गए हम लोग नॉक कर रहे हैं रूम खोलते नहीं है और इधर हम लोग तैयार है संबलपुर जाने के लिए इनको उठा रहे नहीं हमको जाना नहीं अंदर से बोल रहा हमको जाना है हमको छोड़ दो तो हम लोग गए अंदर घर में कमरे में जा करके एक चटाई बम निकाला और जला करके डोर के नीचे से इसके डाल दिए और जब ये बम इनके कमरे में फटा है तो जो गाली देते हुए निकले
वो हमको अभी तक याद है। अच्छा, आनंद है sorry, पुजारी। sorry for the गाली। Okay, great. Okay, thank you. Debasis, Ratha. Well said, very well said, Arthur. Do we have the photograph? Number nahi. देवाशीष फोटो देनी, देवाशीष फोटो देनी। भाई नमस्कार, समस्त नमस्कार। आरंभ करिया पूर्व मो गोटे इनसीडेंट जस्ट कवि जोटा काली होता मु आ रश्मि आसलु नोएडारू फ्लाइट धरिया तो जो टैक्सी आम आसलु एम सामने दिन 2टा बेले से गोटे ट्रक बाड़ेदेला ट्रक एम बाड़ेदेला पूरा ता इंजिन रश्मि मत पचारा कौन फ्लाइट मिस हो मुझे जमा मिस हेनी बिकज वी आर गोइंग फॉर अ गुड कज सो टाइम मिस होने कौन से चांस नहीं तो हम राइट टाइम एयरपोर्ट पहुँचलु से ये पहुँच जाता प्रभास पहुँच जाता सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट यस सो ऑल शुड अप्रिशिएट नाउ कमिंग टू माय पर्सनल फ्रंट बुल्लार तो बहुत गुड़े इनसीडेंस होती तो मु बुल्लार पास कलापर एनटीपीसी जॉइन करी 17 वर्ष एनटीपीसी रही तापर गोटे ऑर्गेनाइजेशन जो समय अच्छे दैट इज कॉल्ड लैंको इन्फ्राटेक सेठी मैं रही 5 वर्ष तापर ताको छाड़ी कर मैं बीएचएल अच्छी सो दिस इज नॉट सेल जोटा मो सर्विस पीरियड आ ये मझीरे जो लैंको थी मु बुला आसुली तो थरे मुझे आसती कैंपस इंटरव्यू करने से समय 30 जन नहीं एटू बुलारू तो से समय बुला आस देखते जो इनसीडेंस होता जो ये अच्छे से समय लगता कि गोटे हवा दरकार सो दैट आलुमनाई कुछ हेल्प कर मो फैमिली रे पुओ क्लास 10 अच्छी झील क्लास 4 रे मिसेस सी इज हाउस वाइफ भुवनेश्वर सी वाज वर्किंग बट नोएडा सी इज हाउस वाइफ सो दिस इज द फैमिली दिस इज इन नॉट सेल बाकी थैंक यू ऑल appreciate for his coming to campus and getting 30 engineers. Dhruva Sahu. So let him complete the phone and then come. एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून मिसेस तो सबुदिन अच्छी यही फंक्शनटा सबुदिन 25 वर्ष थे आसी से यहीटा बेसी इम्पोर्टेंट मिसेस तो जीवन सारा रहा एक्चुअली फंक्शनटा जहाँ भी हो सक्सेस है बोली आम धरवा किंतु मोर प्रपोजाल है आम जी मिसेस और छुआ पिला नहीं आसते तो भितर गोटे माने गेट टुगेदर होता मुझे भल बेटर होता आउ से एक्चुअली भी इंटरेस्टेड थिले वेंकट आसला वेंकट से मोर तो आरंभ लिंक अच्छी वेंकट विथ फैमिली से आसला आम घर को आम से चाहूले आसवाई वेंकट भी कहूला मत नहीं नहीं कि जा मुझे कहला अरे समस्ते तो जेंट्स थी ओनली 2 जन मैंने से कौन काउ भितर बग 2टा बसिकी रे समस्ते अनेबे अनेला बेलू भारी प्रोब्लेम हो से आम कौन कलु गाड़ी गोटे ठीक करदे पठेदेलु हरिशंकर को आ से रिटर्न करूँगा से मत कहते तुम सरला ना आमर सरीगला अनेवा को मना करनी ना ना अनेबे माने तांको खराब लागिवो तमे ध्रुव भाई नहीं गैदरिंग थले भल लागिवो प्लीज स्मरण कर दो ध्रुव भाई मु भाबुची फैमिली न आनिबाटा उचित हेची कि अनुचित हेची संध्या 8टा पर जना पड़िबो जना पड़लानी नहीं नहीं स्मरण स्मरण इन योर एब्सेंस Shobhan has proved that he is going to be Sant Shobhan Lal. He has many families, so we must inquire it. नहीं नहीं संध्या पर जो जना पड़ो मो हिसाब से वाइफ हूँ गोटे ब्रेक है लेडीजटा लेडीज है वाइफटा वाइफ है यही जहाँ भी जिते भी पीऊे वाइफ सामने केते जन पीऊे केते परसेंट बहुत कम परसेंट बहुत कम परसेंट 5% से मुझे वाइफ मैंने आसले भी प्रोब्लेम किसी हबार ना किसी हबार ना आम 50 वर्ष हो गले आम कौन करवा
आमे अन्य जन झील को झील भाया देखा अन्य किसी देखानी ना आ वाइफ को भाभी भाया देखा भाभी तो माँ है ना सोबर नहीं नहीं षंढ षंढ बुढ़ा है बुढ़ा षंढ ना ओके ध्रुव फैमिली विषय कही दियो पुओ झियो कहल तो हाँ एक्चुअली मोर एक्चुअली मु अच्छी ओपीटीसीएल अच्छी मैनेजर अच्छी एबे बलांगीर रे होम टाउन रे अच्छी मोर बाहागर हला 95 रे से हाउस वाइफ विजयलक्ष्मी साहू आउ फॉर्चुनेटली आ भेंकट तार मिसेस रो ना भी विजयलक्ष्मी साहू आ मोर मु भावुची भेंकट मु दुई जन एक छिड़ा कही भल होता सब सामान अच्छी सुविधा होता तुम खोजब तो किए विजयलक्ष्मी दी जन जाइछंती मिसिकी जाइछंती कथा कहूची मु आ बड़ झीटा से +2 सैला से इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करछि भुवनेश्वर रे सेकेंड झील 7th क्लास पढ़ुची आ थर्डटा पुओ से क्लास 2 रे पढ़ुची सो मच थैंक यू Good afternoon, friends. First of all, my condolences to our friends who have expired, and thanks to the speech given by Mr. Sohan Roy. Really, after completing my study at Bulla, mu FCI Gorakhpur asla post. Gorakhpur, tapare DI सेंटर सुंदरगढ़ पोस्ट आसला से जॉइन न करके APSC पोस्ट आसला से जॉइन कली बट नाउ आई एम AD ST मीटर्स विशाखापट्टनम अबाउट माय फैमिली आई हैव ओनली वन लवली डॉटर सौम्या हु इज मिसिंग दिस पार्टी शी वाज वेरी ईगर टू कम टू दिस पार्टी बट अनलकी वी मिस्ड एंड थैंक यू फॉर ऑल थैंक यू सो मच डेंगा बाबू मैंने डेंगा ना जदि कहीं न कही पारे मुझे कही पारि नहीं किए जानी पारुनी केशव डेंगा कहले जान प्रशांत कहले तापरटा तू फिलअप कर नमस्कार सकाळर आमर सिविल इंजीनियर मानकर स्ट्रांग फाउंडेशन पर इलेक्ट्रिकल वाला आसिक इलेक्ट्रिफाइड करदेले only someone only so I don't know how many of you remember of our batch I was the first mess secretary I don't know how many of you remember Mr. K.C. Sahu was there our superintendent of our south hostel and I was appointed as the first mess secretary and that is not important kate marthilo kon marthilo the important thing was when I was mess secretary K.C. Sahu actually one evening what we did we had a friend in medical Bulla Medical, me, Partha Mishra was my roommate, and Nava Mahanti, and few other friends. We went to University Square. We had daru, we had ganja, same evening, okay, and that was my first exposure to daru and ganja, okay. And I don't know what happened that day, and we had both the things, and we came back, and all the ward boys, they could immediately know the secretary sahab was down. And next day, the
sir को पढ़ेला खबर पढ़ेला and I was called to his room and I was just given a thorough warning. You have been given a responsible post and I had lot of faith in you. That's why you have been made this in charge and you are now doing all this nonsense. तो हम लोग कुछ माफी मांगा, उनको बोला कि सर और नहीं होगा, छोड़ दीजिए. That is one of my experience which I'll never forget. Okay, and thanks to Prasanna Panda, started giving me a name. He gave me a name as Ganju. I have never smoked ganja after that day. Okay, but Prasanna Panda, being Prasanna Panda, he starts something and that never ends. Okay, and as far as my family is concerned, I am happily married to my wife Chinmayi for last 18 years. And I am blessed with 2 children. My son Divyansh, he is in class 12th, and my daughter Prachi, she is in class 6th. And as far as my professional careers goes, after passing out from Burla, I joined Vizag Steel, same year, 89. Unfortunately or unfortunately, I am still continuing the same company. I am working as electrical head of SMS department of our plant. Thank you very much. I am having a great time being here in this function and hope you all must be loving it. Thank you. Thank you, Denga. So, Akhila 49 serial Amarendra Patnaik. Khandu, bhai. यहाँ पर विनय, तापरे गुप्ता. नमस्कार मु 1989 मसीह यूसी बुर्ला पास कला बहुत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रे परीक्षा देली एवं सबुथिर अनसक्सेसफुल हेली. तापरे मु विनय मल्लिक एवं एनदर पिला बालेश्वर मिसी गोटे कंप्यूटर मेंटेनेंस फार्म आरंभ कलु, जो कि आम विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन को जाई कंप्यूटर रिपेयर करूँ प्राय वर्षे पर्यंत से काम कलु. तापरे विनय मल्लिक पाइला यूपी दूरदर्शन, सी जाए सर्विस कला. आ मु XIMB रे जाकि MBA कली. MBA पास कला परे प्रथम 10 वर्ष मु गोटे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन रे 10 वर्ष काम कली. तापरे 5 वर्ष ओडिशा OTV रे काम कली एवं सब्सिक्वेंटली 5 वर्ष टाटा इंडिकम रे काम कली. एबे विगत 2.5 वर्ष है किट यूनिवर्सिटी रे मु किट लॉ स्कूल असिस्टेंट प्रोफेसर हिसाब से काम करुच्ची एवं लॉ ग्रेजुएट्स मानक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी. मोर फैमिली विषय रे मोर 2टा पिला, पुओ क्लास 11 रे पढ़ुची ता ना अनुभव एवं झियो क्लास 6 रे पढ़ुची ता ना आस्था. एवं मोर अनुभूति विषय रे बुर्लार जो पढ़ुली से अनुभूति विषय में गोटे इन्स्टान्स कहबी. प्रथम वर्ष फर्स्ट इयर रे मु मोर संपर्कीय सौम्य पट्टनायक एवं बाणी महांती आम 3 जन गोटे रूम रे रहूलु. एवं बाणी महांती से जदि आम साधारणतः आम सब अंडरवेयर पिंधु नॉर्मली जोटा मार्केट अवेलेबल हुए, किंतु बाणी महांती आसीला पुरी रु आउ सी गोटे भिन्न रकम काछा टाइप रो सेटा व्यवहार करता बु प्रथम देखि हनुमान काछा बाणी हनुमान काछा मु कहली ए जिंसटा कोन आश्चर्य को लागु थाए. तापरे मु ता प्रथम 4-6 दिन किछि कहली नु ठीक अछि कोन सब टांगुची विभिन्न जगह. दिने मो घर फेरिला बेल को मो रूम को अन्य जगह न सुझे से जो 3 गुणिया 4 गुणिया जिनस गुड़ा मोरी बिछना पर सजै देछि हैला. मो कहली बाबा तू तो गोटे उद्भट जिनस पिंधुचु हैला, तापर सेटा मो बिछना कहीं पकाउचु, तू तोर ताको जागृत कर रख. एति कहि मो वक्तव्य शेष करी. मूलरू याडे साडे पकाउथला. धन्यवाद. या सो माइक दिया एठी माइक रजब माइक अछि. हेलो हेलो. अच्छा मोर बंधु अमरेंद्र पट्टनायक व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज खांदू जोटी कहला मुझे ऐड करी. गोटे वर्ष पर्यंत आम 2 जन जो मिसी कंप्यूटर फार्म में काम करूँ विदाउट एनी पेमेंट से कह भूलीगला. आउ तार 30 वर्ष तलर गोटे लुना थिला
सी ताकू चलाए मु पछरे बसे से चलेबाटा जिते कष्ट नुहे पछरे से जो लुना कम हाइट बसियाटा बहुत आम कौन करिया चाकरी नहीं बहुत कष्ट करिया पड़ला जहा घुसरी हासरी भाई मो फोटोटा टिके लगा मो स्त्री छुआ गोटे देखिए लोक अच्छा बाय द वे प्रोफेशनल लाइन रे तापर लेक्चरशिप कली दूरदर्शन चाकरी कली बिलाटेस चाकरी कली फाइनाली सेटल्ड इन ओपीटी सेल एज डेप्यूटी मैनेजर टेलीकम्युनिकेशन पोस्टेड एट भुवनेश्वर प्रोफेशनल लाइफ स्त्री गोटे अच्छी मझीटा पुओ अच्छी समस्त पुओ जमी पढ़ुची सी भी किसी गोटे पढ़ुची अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ए नेशनल लेवल डांसर गोटे मिनिट स्त्री गोटे अच्छी अंडरलाइन करंतु क्वेश्चन जा करिवे हाँ ओनली सन सार्थक सी गोटे नेशनल लेवल डांसर डीआईडी लिटिल मास्टर मुंबई जने सिल्वर स्विंग्स पर्यटन जाइथिला एंड वेरी हैप्पी बुलार बहुत इनसीडेंट अच्छी सब तो कह गोटे इफ टाइम परमिट्स ओनली आई विल टेक 1 मिनिट मो लाइफ रे केबे डैश ऊपर आसेनी किसी कप फप मिलनी ठेली पेली कि जहाँ भी हो फाइनाल ईयर रे जस्ट एमती बसीची और सांग मानकर देखी मो नाटा कहगला विनय कुमार मल्लिक एक्सपेक्टेशन बाहर मत पुनी कप मिल बहुत खुशी रे आसिली कप टी नेली तापर एमती निगम सामल एमती 3 जन 4 जन ना कहगला से कौन अच्छी मत तो गोटे कप मिली किसी समय पर जाना पाइली फाइनाल रे जेतिकी भी ड्रामा करते समस्त गोटे कप देइचंती सो जो खुशीटा मो पाई जे दिस आई हैव अचीव सेटा भी बेसी समय लास्ट कलानी हला एंड थैंक यू वेल आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली प्राउड दैट मोर रूममेट थिले विजय महांती अमरेंद्र पटनायक वेरी नाइस गाय इंटेलिजेंट गाय एंड श्रीकांत पटनायक आई एम मिसिंग हिम लाइक एनीथिंग एमंटू बहुत किछि शिखी पाठ बोली कहूनी पाठ फाठ माने डिसिप्लिन आठू तो डिसिप्लिन शिखी इज अ मोस्ट डिसिप्लिन बॉय ऑफ आवर ब्रांच सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल थैंक यू हेलो अच्छा विनयर मुह टिके किनु सुखा सुखा देखा जाउची कौन ट्रेजरर अछंती बोली ना कौन ने ओके थैंक यू सत कथा कहया गले विनयर मुह टिके सुखा रहबाटा जेन्युइन काहे ना एबे विनय मोर प्रताप सब बाहर बसी गणित कस्तुलु तो सुखा हलानी टिके एनीवे विल नेक्स्ट इनवाइट आवर गुप्ता नमस्कार मोर बुलार 4 वर्षर अनुभूति मुझे कहबी गुड़ाए बही हम माने प्रत्येक जन जन संगे गोटे गोटे बही मोर हो तो टिके कहूची गुप्तर 2 जन संगे मोटा बही हम गोटे परिजा भाई गोटे शोभन आउ तापर छोट छोट बही जा संगे हम बुर्लारू 89 रे गला परे आमे पुଳାଏ सेल रे जॉइन करी गलु एट ए टाइम आलोक महांती भाईना मिश्र डीडी शतपथी आमे सब जॉइन करी गलु से माने दुर्गापुर रे रहले आमे राउरकेला आसी गलु राउरकेला जॉइन करिवार 2 मास भितरे से लोक आसी गले गाड़ी वाला समस्त गोटे गोटे स्कूटर लोन रे हमको दे देले तो स्कूटर गोटे गोटे पाई गलु पुनी सैलरी रेगुलर सैलरी मिलला तो 2 वर्ष एक्सटेंडेड लाइफ बुर्लार जहाँ लाइफ थला 2 वर्ष पुणी एक्सटेंडेड राउरकेला रे गला तापरे पुणी इंजीनियरिंग सर्विस पर टेलीकॉम रे मु जॉइन करछि वर्तमान सुधा सेइथरे ही अछि 95 रे मोर बागर हैला आई एम ब्लेस्ड विथ 2 डॉटर्स मो बड़ झियो ग्रेसी से क्लास 10th रे पढुछि डीएवी चंद्रशेखरपुर आउ मो सान झियो मर्सी क्लास 2 से सेंट जोसेफ हाई स्कूल भुवनेश्वर पढुछि मो स्त्री हाउस वाइफ राजश्री ओडिशा रे 14 वर्ष रहिला परे मु बेंगलोर जाइथिली बेंगलोर में 5 वर्ष थिली से 5 वर्ष भितरे आईएम बेंगलोर रु 2 वर्ष जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रे 2 वर्ष मु सिटी एमबीए कंप्लीट कली तापरे ओडिशा रे आसी एबे जॉइन करिछि मु ओडिशा रो जो प्रोजेक्ट डिविजन मु हेड करछि दैट इज 500 crores प्रोजेक्ट एवरी ईयर आई एग्जीक्यूट ता व्यतीत अबिका जो एनएफएस प्रोजेक्ट अच्छी नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम जोटा स्पेक्ट्रम उपरे कथबार्ता होचे ओडिशा रे मु सेटा इंप्लीमेंट करछि दैट इज 900 crores प्रोजेक्ट तो बर्तमान मोटा मोटी मु प्रोजेक्ट काम ओडिशा रे टेलीकॉम रे मु करूछि अच्छा से तो गला कथा
ବୁର୍ଲାରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯଦି ନ କହିବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଖାନ୍ଦୁ ତୋରି କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି। फाइनाल इयर रे सबुदिने संध्यारे खांदूर साइकेल थाई खांदू मत साइकेल रे बसैकी नब काले मु कुआडे मड़ई देवी क्या काले कौन ये करी मत बसैकी नब मेडिकल कॉलेज सामना को जीवु सेठी झियो देखिबु जल दोसा खाइबु पुणी संध्यारे आसीबु संध्यारे आसिकी तापर जहाँ करवा कथा करी पुणी हॉस्टल रे रहिबु। थैंक यू वेरी मच। हेलो फाइनल इयर बॉयज तुम मानक टे मजा लगुव आम जो संध्या हेले जाऊँ मेडिकल यूनिवर्सिटी आम पिला एंजॉय करूँ कारण आम से आम सहित कई झील पढ़ु नुले हार्डली 2-4टा झील पढ़ुले आजिकल तो झील 60 पुओ 40 हो जाती सो नेवर माइंड। सो नेक्स्ट रजनी। गुड आफ्टरनून। मु 89 रे पास होला परे तापरे पावर ग्रिड जॉइन कली 93 रे पावर ग्रिड जॉइन कला परे थ्रू आउट द टाइम माने मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट बेंगल रहिली अराउंड 13 ରୁ 14 इयर्स रहिली वेस्ट बेंगल रे तापरे ओडिशा आसिली 2007 रे कलाहांड रे थिली 3 वर्ष तापरे आसिली राउरकेला रे रिसेंटली मु कटक रे पोस्टिंग होती कटक रे 1.5 मास है मुझे एका अच्छी आउ फैमिली बर्तमान राउरकेला अच्छी आउ बुर्लार गोटे लास्ट अनुभूति मु फास्ट इयर रो कहूँ आम से जाऊँ आमर जो बस रे जो कॉलेज रो बस रे जाऊँ मार्केट फास्ट इयर थिला बेले तो जनरली मु आम बैच रो जो इलेक्ट्रिकल ज्ञान प्रकाश रथ थे आम दी जन एक थरे गलु बुर्लारू संबलपुर गलु संबलपुर जाइकी मार्केट करके बुलिकी आसला बेलू समस्त मन थी से लास्ट रे गोटे हीराकुद गोटे बस छाड़े आ गोटे बस आसे आमर ये बुर्ला आम भूल बसी गलु हीराकुद बस रे आउ राति 10:30-11 जाके पहुँचलु से कौन एत लाइट कौन आज भाया तो एबे तो डेभलप हो नाला कौन एत लाइट देखा जाऊँगी एत माने इल्यूमिनेशन कौटू आसला देखला आम हीराकुद पहुँची जापर मु आ ज्ञान प्रकाश रथ राति सारा से स्कूल कौन मत माने मशा फसा खाई सका कटेलु चली चलिकी आसलु रेमेड छक से पुणी गाड़ी धरिकी आसलु तापर आउ गोटे एमती जदि समय परमिट करे मोर थर्ड इयर बोधे रूममेट थिला ये अश्विनी खालको सी चेन स्मोकर थिला से टाइम रे मु से टाइम रे सिगरेट आरंभ कर नथली तो थरे मु जाइथिली घर को तापर आसिली मु कहली अरे मोर तकियाटा गला कड़े मेरा पिलो कहाँ गया यार बोलता वो नीचे है ऊपर से मतलब सेकंड फ्लोर तले देखेला बोले कि क्या दिखा रहे हो नहीं वो एक्चुअली मैं सो के कंबल ओढ़ के सिगरेट पी रहा था तो तुम्हारा पिलो आ गया अब जल गया पूरा हम क्या करेंगे उसको फेंक दिया नीचे आ मोर वर्तमान ये मिसेस तो राउरकेला अच्छा अंजुश्री बेहरा आ पुओ गोटे अच्छी सुमित बेहरा क्लास 10 रे पढ़ुची डीपीएस राउरकेला रे मु प्लान करुँच ये क्लास सेशन सरला परे भुवनेश्वर कि कटक रे फैमिली शिफ्ट करी। थैंक यू रजनी। नेक्स्ट विल शिफ्ट टू मैकेनिकल ब्रांच सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर वाइस प्रेसिडेंट विजय महापात्र Anti, sorry. 58 सीजन नंबर sorry ना विजय महापात्र बीजेपी रो तो सिपाही कह देला नमस्कार भाई मैंने मु तो आगुरी कही तेणु मोर आ अधिकार नहीं अधिक कहवाई निज विषय टे कहबी मो फैमिली से अच्छा मु एठू पास आउट कलापर इमिडिएटली आई जॉइंट सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट रे 5 वर्ष रही 5 वर्ष रु 2 वर्ष मस्ती रे कटिला ट्रेनिंग रे तापर मुझे जो बोर हवा आरंभ कली से एपट सेपटे खोजिली कुआड़े जीवी मत गोटे आईएसएम धानबाद पिलाटा मो सांगे पढ़ुला सी सबुदिन कौन गोटे पढ़े आम बुलूँ मोटरसाइकेल रे सी पढ़ुव मुझे तू पढ़ुचु कौन ए तोर आउ कौन पाठ कहले मुझे सिविल सर्विस परीक्षा दूसरी मुझे से गोटे कि परीक्षा बाय गॉड आई डिडंट नो बाय दैट टाइम कि सिविल सर्विस परीक्षा कौन गोटे होची बोलिकी मुझे इंजीनियर हवा सी कहला यहाँ परीक्षा एमती पढ़ले हम गोटे प्रिलिमिनारी दबू तापर गोटे मेन परीक्षा हम दबू मुझे तू कौन यहाँ गोटे बही पढ़ुचु यहाँ पढ़ले हो हाँ यहाँ पढ़ले हो मुझे मुझे देले हो पार
कहला तू दौनु चेष्टा कर देन आई मु कहल तो यू गिव मी दैट बुक मुझे जाइकरी जेरक्स करके नहीं आसली से बहीटा को दिस वाज ए जियोग्राफी प्रिलिमिनरी सब्जेक्ट बही तो मुझे एमती देली तापर तार क्लीयर होगला मोर भी क्लीयर होगला जस्ट लाइक दैट प्रिलिमिनरी सरीगला मुझे कहली अबे नाउ व्हाट ना तो मेन परीक्षा देवाई पड़ो मुझे दवाई पड़ो आउ कौन आहरी बही कहला आहरी 6टा सब्जेक्ट तो विभिन्न जिनस सब अच्छे 2टा सब्जेक्ट चूज करूँ ये करूँ सी करूँ मुझे मला मनीष करी बही कहीं किसी ना दुर्गापुर नथिंग वाज अवेलेबल तो सी कहला गोटे कम कर चल पाटना जा आम जो गोटे गंगा दामोदर एक्सप्रेस थी से पाटना आम बस गलु से पाटना गोटे अच्छी जगह गांधी मैदान पाखे गोटे गुमुटी पाखे गोटे लोकटे बस खाली आम जमी पान दुकान ये बस थाए ता आगे एमती माउंट्स ऑफ बुक्स सब जेरक्स थुआई से सब विभिन्न प्रकार स्टडी मटेरियल सब फ्री रे आम कहलु अरे बही दे सब्जेक्ट शिखो सीटी बाछिकी नियंतु आज्ञा आम पाखे कौन सीट तो नेबे आ कौन 800 टंकार बही किणी धरिक आम आसलु देन वी एपियर्ड बोथ ऑफ अस लकीली गट थ्रू तो से वर्षर मत जहाँ मिलला ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस बट आई वांटेड टू काइंड ऑफ इम्प्रूव आर वर्ष देली से को मंडल कमिशन हो जाता तो वैकेंसी वाज हाफ एंड हाफ सो आई अगेन लैंडेड अप इन ऑडिट एंड अकाउंट्स आई एम हैप्पी ओवर देयर नाउ आई वर्क एज अकाउंटेंट जनरल इन छत्तीसगढ़ तो आमर माने चारि ओडिशा जाक बुलाबुली करिया चाकरी इंडिया जाक तो जी आमको आजिकल लोक बहुत गाड़ी दौरान कारण जी बाहर सब स्काम्स ता पछरे आम मान रिपोर्ट रोचे से 2G स्काम हो पेट्रोलियम स्काम हो कि कोल ब्लॉक एलोकेशन हो से आम मान किसी कंट्रीब्यूशन रोचे सो वी आर इन द पब्लिक आई नाउ मो वाइफ लेखाश्री सामंत सिंगर सी इज ए PhD इन एनवायरमेंटल साइंस until 1 year back she was an associate professor in Ravenshaw University now she is quit that job now she is working full time for Bharatiya Janata Party she is a politician now and she is in the state executive and she is the spokesperson of BJP I have 2 daughters 2 जन अच्छी गोटे standard 6 रे पढ़ुची आउ जने just prep रे पढ़ुची 2टा झियो on the other side ये तो प्रोफेशनल हला मु लेखा लेखी करी छोट टिके अधे एबे टिके फुल फ्लेजेड करुच्ची लास्ट ईयर मोर गोटे बही कविता बही बाहर थिला इंग्लिश रे जोटा हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल लॉन्च होती माय सेकेंड बुक इज कमिंग अप इन 2 months टाइम आउ मो वाइफ जने भारी इंटरनेशनल लेवल रो पेंटर लास्ट ईयर सी हैड एन एग्जीबिशन इन कुआलालंपुर से चारिआडे बोलिकी करे सो तेणु आम प्रोफेशन सहित ए साइड रे ए जिनस भी करुचु आ बुर्लार एक्सपीरियंस जस्ट 2 minutes ये मु 2 मास पर जॉइन करी से बोधे अधा टर्मिनाल सरीगला परीक्षा मुझे देनी अधा तो आई इनिशियली आई डिडंट लाइक इट ये गोटे कम मुझे करी व्हेन आई जॉइंड हियर आई वाज अराउंड आई थिंक 40 kg और 39 kg समथिंग लाइक दैट रैगिंग करने जी जो आसला मुझे कही मत टीबी आज्ञा मत पिटंतुनी तो दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू टेल एंड गेट अवे विथ इट मो सागर परिजा भाई रोला से रूम रे राजू मेयर रोला एमती करी मु पारी कहीं टीचर मान विषय किसी कहलेनी ये मुझे शिखिनी ये पढ़ीनी किंतु टीचर मान 3-4टा कथा मोर मन अच्छी जोटारू मुझे बहुत किसी शिखी ये जन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीचर थे प्रोफेसर मिश्रा तांकर थरे मु टाई धरी बिकज आम गोटे सी अधा से हाफ पास मिलूला जावाई जो घर को हाँ ट्रेन पास एंड दे विल गिव इट एट द वेरी लास्ट मोमेंट तुम ट्रेन 4टा बेले थी तो सी 12टा बेलू देवे तेणु एवरीबडी वाज क्राउडिंग हिम आउट कि दी दियो दियो पास तेणु मुझे मागुली मो पासटा दियो सी खोजी खोजी बेचारा पाऊनी मो पासटा तापर कहला ए तू यू आर ए लायर तू पास अप्लाई करनी मत मागुच तेणु मो मुंड को कौन पित्त चढ़ीगला मुझे ये धरी पकड़ी मुझे कहले अरे कौन लायर देखू खोलिक देखला बेलू अच्छी तार से सी कहला तू एबे थरे करदेलु बंचीगलु आउ करबुनी जा मत करी आई मेट हिम अगेन सी एठी ITR रे प्लेसमेंट रो हेड थिले बट देन आई काइंड ऑफ मेड पीस विथ हिम सेकेंड हूँ ये आउ जड़े थे आचार्य आमको पढ़ाऊे कौन हेले आचार्य मुझे दाढ़ी बहुत रखी थाए मत कहला तू दाढ़ी रखी क्लास को आसु कहीं आसबुनि मार्क देवे मुझे जब दाढ़ी नंबर देवे आप मुझे भंडारी दुकान में बस आप कहीं आसबि तेणु ही वाज वेरी शॉक्ड कौन एमती कौन कथबार्ता कर आउ सब इंटरेस्टिंग कथा से मो पाखे फाइनेंशियली वर नॉट दैट साउंड आई वांटेड टू टेक ए स्टडी लोन I went to N. Patnaik of all professors because he was the principal to give a certificate कि ये पिलाटी ये पढ़ुची तार एति cost. He point blank refused. Then I went to KC Patra to get a certificate about the hostel cost. He point blank refused. 4 times I must have gone to them. So मैंने मना कर दिले. So this is the kind of attitude. Another finally the loan through some other means that I know.
ଏଠି ବହି ମୁଁ କେବେ କିଣିନି, ବିଲକୁଲ କିଣିନି। ତ ବହି ପାଇଁ ମୋତେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା ଅଛି, ତାର ସବୁ ତାକୁ 7ଟା ବହି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ମିଳେ, ତା ବହି ମୁଁ ପଢ଼େ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଗୋଟେ ଥର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବହି ତ ଓପନ୍ ବୁକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ଓନ୍, ତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଲିମିଟେଡ୍ କପି। ମୁଁ ସେଦିନ କ'ଣ ଶୋଇଯାଇଥିଲି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୁଡ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଟ୍ 5 o'clock, ନିଦ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ 5 o'clock, ସୋ ଆଇ ରେନ୍ ଟୁ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ବହି ଅଛି ସବୁ ଅଛି, ମୋତେ ଦେଖିଲା କହିଲା 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କାରଣ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଗେଟ୍ ଏ ବୁକ୍। So this is the kind of attitude through which we have passed through in this institution. I am not complaining against anybody, but they were never bothered about, like they were never helping people. ମୁଁ ସେଟା ତ ପ୍ରଫେସର୍ସ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଇ ପାରୁଛି। ହୋପ୍ ଆଜି ଦିନରେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଟୁର୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଅଧିକ। ସୋ ୟୁ ନିଡ୍ ଆନ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡିଆଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଯଦି ଆମମାନେ କିଛି ଆଲୁମିନି ହିସାବରେ କରିପାରିବା, ଆମକୁ ଯଦି ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଅସ୍, ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ଆଣ୍ଡ thanks very much. At least we are 75 together. We'll try to encourage this again. Thank you very much. So I want to thank Vijay for helping a lot in arranging this function also. We had a nice party in one evening at his home, at his quarter, and Bhauja, oh, she is a jubilant lady. बहुत मजा करथिलु. Thank you. So next Biswajit Mahapatra. Silu, fondly we call Silu bhai. नमस्कार। प्रथम है यूसी जो बैच रे आमे थिलु से गोटे ड्रीम लाइफ थिला मो पई। समस्त गोटे गोटे क्यारेक्टर थिले आउ से ड्रीम रे जहाँ घटी जाए सेटा मने पकाउछु 25 वर्ष सब बेले माने खुशी लागुची दुख लागुची। आज देखुची जो माने सब आयोजन करछन तांको गोटे बड़ थैंक्स। आउ जो मानक सागर मोर इंटरेक्शन थिला मु जहाँ को काउंट भी कहथि कि मोर समस्त से गोटे दिलदार हे कि गोटे बंचवार गोटे ये थिला। मु खुशी रे सब ग्रुप पिला संगे मिस जाउथली। पाठ तो पढियार जेम से केही पढु नथले मु पाठ पढु नथली कि से जो मेमोरी गुड़ा अच्छी इट्स माने गोटे जमाट बांधिकी गोटे रही गोटे इमोशनटा से एक्सप्रेस किसी सेयार करी एवरीबडी सेयारिंग मु खाली या कहूँ इट वाज एटा अनफरगेटेबल से लाइफ रे गोटे सब बेले आसीबो। आउ मते बहुत माने फ्रेंड माने एमिति हेल्प साहाय्य करछथि पढला गोटे सपोर्ट देकरी परिजा भाई रमा प्रदीप भाई ना विजय महांती नेम एनीबडी विमलेंदु जहाँ पाकू जाए मते केते ग्रीट करती बोले से रूम में गोटे खटी चले से लाइफ टा मैंने मन पकाऊ चेष्टा कर मैंने दिस इज माई दैट 4 years now I'm recollecting after 25 years. Secondly मु कहबी मु I got married in the year 1995. So my wife's name is Arpita and my son's name is Mukund. आउ मुकुंद जे से क्लास 11 रे पढ़ुची. My wife was working with HEC but after marriage she has changed to teaching line. Right now आमे सब बैंगलोर रे रहूचु. माय वाइफ इज टीचिंग एट DPS बैंगलोर. आउ मो पुआ भी से DPS रे पढ़ुची. मु 89 रे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर रे जॉइन कली एंड आई वाज पोस्टेड फ्रॉम 90 टू चंडीगढ़ कॉल्ड प्लेस कॉल्ड पंचकुला. पंचकुला रे से रही मु 20 वर्ष पर मु पुणी बैंगलोर पळै आसी. लास्ट 5 years मु सेठी अछि. एला मो फैमिली विषय आउ मु जो काम करछि सेठी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन अछि. सेठी प्रोक्योरमेंट हेड फॉर दैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिवीजन रे. तो देश जो इलेक्शन हुए से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कंपोनेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे प्रोक्योरमेंट कराए से काम भितर से. बट आई एम हैप्पी दैट मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स आर इन वेरी गुड पोजिशंस. दे हैव भल भल मैंने रही खुशी रही. आज देखा करा समस्ते आसुँच. आ गोटे मजा कथा मोर कहबार अच्छी आम गोटे जो फैमिली विषय होता आमर जनक सागर मोर भी फैमिली रिलेशन हो जाइए आम सांग मान भितर. आउ with his permission I am telling I am married to the cousin of Mr. Sovan Roy. सिलू भाई को आउ थे आम धन्यवाद जनवाई चाहूँ. फेसबुक रे से बहुत रिक्वेस्ट कर एनीबडी गोइंग टू बेंगलोर काइंडली मीट हिम. कहवा को भूली गली फेसबुक देती. आपर मिस्टर विनय मल्लिक मो पाक प्रथम देखा कर आसले. समहाउ वी टुक टाइम एंड मेट इच अदर. आउ जड़े जन बाय चांस मिस हो जाए आम देखा कर पार्नु. तो एनीवन कैन सेंड मी ए मेसेज थ्रू फेसबुक व्हाट्सएप.
मुझे भी किए बैंगलोर आसी दे आर ऑल वेलकम ए सिलु क्वेश्चन टा मोर अछि थैंक यू तते ओडिसा रु ईवीएम टैंपरिंग रिक्वेशन मिली नथला ईवीएम टा होची टैंपर प्रूफ आमे ओडिसा रे सुनु ओके ओके लेट अस स्टॉप पॉलिटिकल लेट अस स्टॉप इट बट इट इज टैंपर प्रूफ नेक्स्ट देवेंद्रनाथ करण Dear friends, we have to shorten our this discussion because final year students have been allotted 5:15. It is 4:30 now, so another 15 friends in mechanical. So I request our all friends to be brief. अच्छा समस्त को नमस्कार मु कहली समस्त को नमस्कार अच्छा अच्छा समस्ते जो जो कहीगले समस्ते आजिकल माने टेक्निकली साउंड आउ कौन कौन बढ़ीगले मु टिके खाली लाइन चेंज कर देछि अवश्य इंडस्ट्री अच्छी खाली टिके लाइन चेंज कर देछि प्रथमे मु मोर फैमिली विषय तापरे अचीवमेंट तापरे मु बुर्लार दी तीनटा एक्सपीरियंस कहबी प्रथमे तो मु 1989 रु पास कला परे सांगे सांग बिलाई स्टील प्लांट रे मो हाथ रे दी तीनटा जॉब थिला आमे जो दिन मोर मन अच्छी आम जून 14 को मुझे बुर्लार छाड़ुलु से मो हाथ में गोटे इंफारे जॉब थिला देन सेल भिलाई स्टील प्लांट रे थिला एमटीटी हिसाब रे तापर देन तापर आसिला एनटीपीसी रु देन वाइजाग स्टील प्लांट रु एंड आम भिलाई स्टील प्लांट फाइनाली मु जॉइन कली भिलाई स्टील प्लांट जॉइन करिवार गोटाए कारण थिला भिलाई स्टील प्लांट सेतेबेले सबुठु प्रॉफिटेबल कंपनी हिसाब रे जना पड़ुला आउ तापरे परे मु ओएनजीसी रे भी देइतिली इंटरव्यू एंड इंटरव्यू बोर्ड रे मु स्ट्रेट फॉरवर्ड आई डिमांडेड वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दैट इज नॉट दी मेंटेनेंस आइदर मार्केटिंग और पर्सनल सेतेबेले कारण मु जेतेबेले भिलाई स्टील प्लांट रे जॉइन कली सेतेबेले गोटे जिंस ऊपर बहुत माने खराब लागुतला सेटा हला जेतेबेले आमे भिलाई स्टील प्लांट रो आपण जो माने जाइथिबे प्लांट भीतर विजिट करथिबे देखथिबे स्टील प्लांट रो दीटा एरिया अछि गोटे होची ये कोकोवेन आउ सिंटरिंग प्लांट आ गोटे होची ब्लास्ट फर्नेस आ सेफ्टी दृष्टि आ गोटे देखा गले सिंटरिंग स्टील मेल्टिंग शॉप ता पाख देखि जेतेबेले जिवे स्टील मेल्टिंग शॉप रे सेतेबेले डर लागिबा आपनको एका संगे पांचटा इक्विपमेंट मूव करूची ब्लास्ट फर्नेस एरिया रे जेतेबेले जिवे देखिबा आपण ऊपर डस्ट पार्टिकल पडुची आमे जेतेबेले ट्रेनिंग पीरियड वर्षे तो भलरे चली गला तापर मु एयर रॉड मिल रे पोस्टिंग आली एयर रॉड मिल रे 98 पर्यंत रहिली ता मझिरे आमे बहुत माने अन्य अन्य सांग सहित आसिलु बहुत पिला हमर सॉफ्टवेयर को चेंज करी गले आम ग्रुप रे जति पिला थिले केही आज भिलाई स्टील प्लांट नांती एटलिस्ट से माने समस्ते चेंज कर दै जंती किछि नले सेट हमर जो आइदर सीएमओ को पळे जाई जंती किबा हमर जो आउ गुटे कंसर्न अछि सेट सेटू पळे जाई जंती मु एका रहिछि एवं सेइथरु भी मु वायर रॉड मिलु चेंज कर दैछि मु 1997 रे आईसीडब्ल्यू कंप्लीट कली 1998 रे डेप्टी मैनेजर मु फाइनेंस को शिफ्ट हेली 98 रु आज पर्यंत फाइनेंस रे अछि मु वर्तमान डेप्टी जनरल मैनेजर 2013 रु अछि भिलाई स्टील प्लांट रे वर्तमान मु भिलाई स्टील प्लांट रो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट रो पेमेंट पर्सन स्टोर्स पेमेंट माइंस बिकॉज भिलाई स्टील प्लांट इज हैविंग ओन कैप्टिव माइंस दैट इज आयरन ओर डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन से तीनटा जाक माइंस रो फाइनेंशियल हेड हिसाब रे मु काम करूची तापर हमरो फ्रेट क्लेम बोली गोटे सेक्शन अछि जोंथरे कि आमे भिलाई स्टील प्लांट रो खाली अराउंड 1200 crores रो पेमेंट करूचू रेलवे को ऑफ कोर्स यस्टरडे देयर वाज ए मीटिंग विथ सीसीएम इन एसीआर कोलकाता आई वाज ग्लैड दैट आई विल मीट भाईना एंड आलोक महांती इन द ट्रेन बट अनफॉर्चुनेटली they missed the train. I was so excited to come here that I could not sleep throughout the night, although I have my train in the Samaleshwari fast AC with one of my friend from up to Raurkela. From Raurkela till Sambalpur I could not sleep even because I was so excited. Anyway, this is how I have my achievements. And my family, I married in 1995. My wife is a professional. She is MBA Rural Development from Xavier Institute of Social Science. We married in 1995. My wife later on done her BA from Chhattisgarh Government College, and she is a teacher in Delhi Public School, Bhilai. Bhilai is not only famous for steel plant,
Bhilai Steel Plant has achieved 11 times the Prime Minister Gold Trophy, and Bhilai is also famous for the teaching. Till now, there are 3 times IIT toppers are from Bhilai, and I am fortunate that I have 2 daughters. My older daughter is in class 12 now. She is the topper of Chhattisgarh. She has achieved 3 times the Science Olympiad, Cyber Olympiad, and Math Olympiad. She has been awarded 3 laptops, 1 lakh rupees. Presently, she is NTSC holder, she is KVPY holder. KVPY is nothing but Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana. It is under the Ministry of Human Research Development. She will be awarded after, if she continues with BSc, she will be awarded 7,000 rupees per month and 28,000 at contingency per annum. And 1 seat is reserved for her in ISC Bangalore if she continues with BSc, not with any technical line, because it is only to promote the science and technology and research. And most probably she will not be joining. She is continuing with FITG. She has a 1,40,000 scholarship in FITG, and her study is completely free. My younger daughter is just opposite. She does not speak less than CO, and I know she is a mediocre, but she is very good in fashion design, and I think I advise her to be either a fashion designer or to be a chartered accountant, not as a professional like technocrat. My wife is a teacher in Delhi Public School, Bhilai. She is I definitely I will appreciate one quality of her. She is a good cook. And regarding my college experience here, my roommate was Sushant Kumar Jana. He is the volleyball champion. Once we are coming from, he is from the same place where I belong. We always come together and go to the house together almost. And one day we are coming after a long break. In Jharsuguda we get down. We do not know which train will be going to Sambalpur. It is the chill night, morning. We board a train. We know that it is going to Sambalpur. And we slept. We reached at Shakti. It is after the Rayagada. We do not know where the Shakti by the time. And today it is on my almost in the home to my office. Whenever we have to cross the Shakti, but by that time we are not knowing Shakti. And again, when we know that we are at a Shakti, we took another 4 hours to reach at. We reach at 4 o'clock in the evening in UCE Burla. We are supposed to reach at 9 o'clock. And also same incidents. Sushant, me and Panda, P.K. Panda of Civil was my roommate. And one day some person came and there was supposed to be ragging. It was in our 3rd semester. It is in 3rd semester there was ragging. When the final examination was there, the second year people beat us. उस टाइम में हुआ क्या कि सुशांत जी जाके दरवाजा का लेच लगा दिए. बोले कि हम लोग को पता था वी आर इन द 3rd फ्लोर. हम लेच लगा दिए, लेकिन वो आया कोई एक लात मारा तो लेच लगाया नहीं था, उल्टा लग गया होगा जैसे भी है. तो वो तो पंडा जी अपना कमल घोल लिए, सुशांत जी एक साइड हो गए. मेरे को इतना जोर लगा कि यहाँ फट गया था. और एक इंसिडेंस प्रभात पंडा एंड शोभन एंड सभी लोगों को मालूम है, विजय महांती वगैरह सबको, वो ईस्ट हॉस्टल्स का इंसिडेंस है. वो शायद कोई नहीं भूल पाएगा. देवेंद्र सबका चप्पल वही रुक गया था. केसी मिश्रा जी केसी पात्रा जी सब ले गए थे और रात को तोड़ के जो हम लोग ले आए. धन्यवाद. Thank you. Actually, we are really jealous of Devendra because God has given all his blessings on his family. I have seen. Thank you. No. Yeah. I was just thinking of critical appreciation by Panda. Okay. Gokul Chandra Shah next. He is absent. Okay. Jugal Kishore Raut is not there. Hirosindhu Meher. Okay. Kishore Chandra Patra. Okay.
कुंज बिहारी साहू, ओके, मनोरंजन प्रधान, मिहिर कुमार मुदली, सॉरी, मुदाली. Lot of mechanical friends are absent. हाँ, धन्यवाद बंधुबान समस्त बहुत बहुत धन्यवाद कि एटा आम अरेंज कर पारे. आशा करुचु कि एटा आम फर्दर आउट कंटिन्यू कर पारिबा. मे बी इन पुरी और भुवनेश्वर कोट गोटे फैमिली गेट टुगेदर कर पारिबा. एंड बिगिनिंग विथ द कैरियर 89 ने पास कला परे देन आई जॉइंड सेल RSP 1990 रू 99 पर्यंत मु सेल रही. तापरे सेल रो कंडीशन स्टील सेक्टर कंडीशन बहुत खराब थिला. तापरे देन आई ट्राइड टू जॉइन बैक इन सॉफ्टवेयर. आई वर्क फॉर एज ए ओरेकल एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 2.5 years, but due to my family problem I came back to Rourkela Steel Plant again, and I married in 1995. My wife is Dr. Jyoti. I have 2 daughters. Both are very small compared to others. One is class 4, other is just KG2. Both are doing well. Both are Odissi dancer, and I somehow missed the photo. I have already sent, but it's not there, so I'll definitely send it. And in my professional life, I am now AGM in Rourkela Steel Plant. And कौन सी इनसीडेंट्स विषय गोटे छोट इनसीडेंट मन पड़ू से आम बुला को नुआ नुआ अल्प किसी दिन फास्ट ईयर था आमको किए कहला चिपलीमा जीवाई बहुत बढ़िया जगह देखा जगह आम बस रे चलीगलु चिपलीमा सेठू जड़े कहला बुला बहुत पाख ये 5 किलोमीटर मात्र हम आम से यंग थिलु आम केनाल बाटे चली चली आरंभ कलु. अराउंड 3 घंटा चलला जन को पचार केते दूर ना आज्ञा आप जी दूर आसिले आहरी ताठू अधिक दूर अच्छी. देन आम संध्या 3टारे से चली राति 8टारे पहुँचलु 26 किलोमीटर चलिकी. तापर भाग्य खराब थिला हॉस्टेल पहुँचला बेलू आमर किए भाई मैंने बाड़े देइछंती कुक को से दिन स्ट्राइक पुणी गलु चली चली खायापाई रेमेड फेरला बेलू रास्ता किसी मिललानी पुणी फेरी फेरी चली चली आसिलु. से दिन मु हिसाब करती 31 किलोमीटर आम चली. दैट इज माय रिन. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. भल लगिला बहुत भल लगिला सांग माने को देखिकी. मीर भाई तुम से दिन एति चलतिलो बोले ए अवस्था रे अछ नहला आउरी अवस्था खराब होइतांता. ओके, नेक्स्ट इज मिहिर कुमार पटनायक. मीर भाई 70 Namaskar. All my beloved 89 batchmates, all our bond of love and my affection, emotion, reciprocal from you brought me today here. Despite my some work was there, and I hope we will continue this every year, somewhere, sometime, and with some family gatherings also. मेरे बारे में कहना चाहूँगा 89 के बाद में पास करके NTPC में ज्वाइन किया. NTPC में अब तक 25 ईयर सर्विस कर लिया. नाउ माई डेजिग्नेशन इज डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड हेडिंग द स्टोर्स डिपार्टमेंट ऑफ तालचेर थर्मल पावर स्टेशन. और NTPC में मेरा 25 साल का सफ़र अच्छा रहा. आई एम वेरी हैप्पी. इट इज़ ए गुड कंपनी. और मेरा फैमिली फ्रंट में माई वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. बड़ा बेटा का नाम है राहुल पटनायक, छोटा अरमान, एंड बड़ा बेटा अभी क्लास 5 में DAV में पढ़ रहा है. छोटा जो है क्लास 1 में है. बस इतना कहना चाहता हूँ. आई लव यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू. सो नेक्स्ट इज निरंजन राहुल, निरोध कुमार मल्लिक, प्रकाश कुमार पटनायक. सो टिके शॉर्टकट कहतु समस्ते सो दैट वी कैन स्टार्ट द फाइनल ईयर इंटरेक्शन सेशन. अच्छा मु बाय द वे जस्ट खाली गोटे अनाउंसमेंट कर देछि
जो फाइनल ईयर पिलांक सहित जो आमर बैचमेट्स माने इंटरेक्ट करेंगे से गोटे सर्ट लिस्टिंग करूँ एनीबडी एल्स हु विश टू interact with final year student can also participate. They are Athar Saheb, Vijay Mahanti, Saroj Mahapatra, Devashish Mahapatra, Rama Das, Rama Panigrai, Devashish Ratha, Prabhas Biswal, Prasanta Misra and Prasanna Kumar Panda. Okay, please carry on. बंधुगण नमस्कार 25 वर्ष तलर स्मृति समस्त को देखला पर पुणी ताजा हो गला सो बहुत किसी स्मृति किसी मीठा किसी खट्टा जस्ट यूसी छाड़ला परे सीधा एचपीसीएल जॉइन कली एबे भी एचपीसीएल कंटिन्यू करूची एबे सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट ऑप्टिमाइजेशन ग्रुप हेडक्वार्टर्स रे ऑफिस नरीमान पॉइंट बॉम्बे रे आउ फैमिली फ्रंट रे नवनीता हला वाइफ आउ गोटे पुओ प्रणीत क्लास 9 रे पढुची समय अभाव रु एतिक रे आपण विदाय नउची आमे कंटिन्यू विल कंटिन्यू टू मिक्स विथ ईच अदर थैंक यू थैंक यू Prabhas. He is the guy who has contacted all mechanical friends and we salute his effort. Yeah, he has contacted but he is the guy for this gathering of huge mechanical friends. मो 89 पास कला पर मो यूसी टाइम बेसी नेबिनी काइना मोर बहुत मु किछि पढनथली केवल गोटे काम करथली यूसी रे ब्रिज खेलुथली I have got many laurels in bridge during UCE also. I represented college. I was playing university. I was playing Sambhalpur district also. Then after passing from college also, I have represented NTPC and Odisha in the national level also. I am a national level bridge player. Okay. So that is one of my major achievement beyond studies. पाठ तो सब लोग पढ़ाई तो सब लोग करते थे ना. तो now actually after leaving UCE, I joined NTPC. Stayed there for 19 years. Left NTPC in 2008. Joined Reliance. After 1 year, joined Jindal Power. After 2 years, now I am for last 3 years I am in Danik Bhaskar Group, DB Power Limited. And this is my family. My wife is a housewife, Sanghamitra Biswal. My daughter is in class 11. She is a good scholar also. She scored 10 CGP in 10th. She got many laurels in her school also. Recently, she has been awarded some scholarship in her school also. My son is 10 years old, but unfortunately, he is a cute boy, but unfortunately, by God's grace, he is not speaking. He is autistic, and now he is improving a lot. But जब ये हुआ मुझे लगा कि why me? But by then I went through many books, other things. Then I knew that God has given us a special boy to take care of him, because He knew this family can take care of such boy. So now I am too happy to take care of this child. And that's my nature is like that also. I am always staying happy throughout my life. During my studies, during my career, everywhere. I always try to stay happy with family and friends. Love you guys. Stay blessed. Next is Rajendra Kumar Meher. Please. Rasmi Parida, he will be coming next. समस्त को नमस्कार ये आसला राजू नाटा शुणी भारी खुशी लगे मत कई जान ना आजिकल राजू बोली कहले मत कई जानवे अदर देन यूसीएंस इवन घरे स्त्रीटा कहबनी राजू बोली पुओ मैंने कहबे नो फ्रेंड सर्कल अदर देन यूसीएंस एनीवे बारी गोटे मैंने से पुणी पुराणा कथा गुड़ा मन पड़े राजू दैट इट इज इकोइंग एनीवे ओएनजीसी सॉरी बार बार ओएनजीसी आई एम रियली सॉरी यूसी कौन देला जिते यूसी पास आउट कलु लास्ट ईयर बहुत किसी जिनस आम फील कलु एक्सपीरियंस कलु से भितर गोटे थिला आम भाया पिला गोटे थिला मोदक रॉकेट मारे मोदक जहाँ आम कहू भांग आ गोटे थिला लास्ट ईयर थरे दी थर तो पीवा पड़ो इट कंटिन्यू टू वेरी लार्ज एक्सटेंट जिते ओएनजीसी छाड़लु मोर गोटे इनसीडेंस मन अच्छी लास्ट दिन प्रोग्राम थिला इट वाज सम जड़े लेडी आर्टिस्ट थिले एमती कल्चरल प्रोग्राम थिला उत्सव व्यवस्था से बालकनी रे
नहीं कि आम से डांस करूँ से कौन से क्लासिकल टोन रे चलता प्रोग्रामटा देन वी स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड दे से जिनटा को आम एक्सप्रेस करने टी जूनियर पिला मैंने अच्छा जदि किए दे शुड नॉट टेक इट अदरवाइज पिचा पिटी पिटी डांस कलु इट वाज सब भारी खुशी लगुला भाई भांग पी दे जना पड़नी द नेक्स्ट डे माने जहाँ को देखले कौ झील पिला को देखले क्या टीचर को देखले एत लाज लगुला वी डिड माने एमती लगुला भाई कौन आम कलु माने भांग खाई एमती माने इट वाज दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर मोमेंट मु आज मन पकाउछि कि आम से कौन करथिले वी डिड एनी डैम थिंग से जिनटा से सरलानी तापर जाकि मुझे तालचेर जॉइन कली तालचेर मुझे जॉइन करनी मुझे गोटे पार्ट टाइम टीचर थी से मो रूम पार्टनर थे जुगल राउत सहित थरे थर आम से भांग खाइचु तापर जॉइन कली ओएनजीसी से ओएनजीसी पाइबा संगे पैरेलली मु पाइली रेलवे एज ए जूनियर इंजीनियर किंतु आई ऑप्टेड फॉर ओएनजीसी रे गला परे so that was a some confusing state whether I should stay in Odisha or Odisha bahar ko jibi so that was the two clear distinct path I had mu कहली ठीक अछि ओएनजीसी रे जॉइन करिया ओएनजीसी रे जॉइन कला परे से भांग अभ्यासटा जण जण सांग मते मिलले ऐसे जण मो सांगरे भांग खाइतेला किंतु से एमिति गोटे दिन थिला से भांग खाइकी से पिलाटा कांदिला एट वन पॉइंट से भांग यू नो भांग इफेक्ट से कांदिला एंड दैट डे मुझे बुझे आई हैड टू स्पेंड हाफ एन आवर और सो व्हाट आई मीन टू से भांग खाई कि हजम करिया ताकू एंजॉय करिया यूसियन करि परियो बाहर लोक डाइजेस्ट करिया एते सहज न सो दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे तापरे दुनिया रे बहुत जगह रे जॉइन कली फर्स्ट जॉइनिंग वाज एट आसाम रे जेतोल जाइथिली यू वोंट बिलीव दिस माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर 90 जो जॉइन करती दैट वाज अ वेरी बहुत सी गंडगोल चलता द फर्स्ट डे आई लैंडेड टिके मु समय नौ ठीक अच्छे बिकॉज आई फील आई हैव द प्रिविलेज टू स्पीक बिट लॉन्गर कारण मु बहुत दूर आसी या सम डिस्प्यूट वाज देयर एंड बोडोलैंड डिस्प्यूट नथिला एक्चुअली तांको से लोकल चाकरी मिल नथिला सेतमै ओएनजीसी को से टारगेट करथिले आउ से दिन जो दिन मु लैंड कले से दिन मु माड खाइची एंड से एका भाया गोटे पिला मुस्टांडा भाया गोटे पिला आसी कान पिटी देला सीटू कान टी रक्त बाहरी गला किंतु कहले नाई सा जीवी नहीं आई विल नॉट गो बैक सो देन दैट डे माय जर्नी कंटिन्यूड तापरे सही पारे दिस वाज व्हाट वी हैड लर्नड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अल्मा मैटर आमे एठी शिखितलु जे वी शुड नॉट बी बैक पछकू चाहिबानी सो दैट इज हाउ आई मूव्ड आसाम रे किसी दिन जॉइन कला परे तापरे गले पांडिचेरी इट वाज ए टोटली न्यू एरिया इन द सेंस ऑल साउथ इंडियन पहला किसी दिन 6 मास खंडे तो यू सडनली विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी डैम थिंग से जहाँ कहबे कौन कहबे ओनली एक्सप्रेशंस विल प्ले द रोल व्हाट यू आर कन्वेइंग एंड व्हाट दे आर कन्वेइंग किसी दिन चलला तापरे धीरे धीरे से एकोमोडेट होके एडजस्ट करके चललु देन वाज ट्रांसफर टू सॉरी मेहसाना दैट इज इन गुजरात सेठी 5 वर्ष रही then went to Assam again is a place which is not very liked कारण से distance जोगु flight availability communication all these issues were there 3 वर्ष रहिला परे now I am at देहरादून रे घर करी छी आउ now everything is all streamlined most probably देहरादून रे आउ वर्ष 2 वर्ष अछि it is said आपण तमन को भितर केही आसी पालेनी केबे भी जदी देहरादून मु अछि anybody is coming he is most welcome मझिरे थरे से सुभाष पृष्टि मते फोन करथिले मु आसी बोली बट ड्यू टू सम अदर रीजन से आसी पालेनी आउ बहुत लोक जान नथले दैट वाज द से पई दैट्स व्हाई आई फील दिस सॉर्ट ऑफ रियूनियन इज ए लाइक ए ओके हां फाइनल ईयर आसी गलेनी अच्छा okay now this is all about my professional career personal front रे मु बाहा आइतले 96 रे मुस्त्रीना कृष्णा मेहर पुओ गुटे अछि क्लास 12th रे झियो क्लास 7th रे अछि and they are doing their studies at Dehradun and we are living happily there thank you
please, 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 please. भाई मान को नमस्कार मत एत खुशी लगुच अनेक बाधा विघ्न सत्वे मु आसी मत बहुत खुशी लगुच आ जीवन रे भी एमती अनेक बाधा विघ्न आसी मो बुर्ला एक्सपीरियंस विषय में मुझे कहबी जो दिन एटू मुझे छाड़ी जाइए बोधे 17 जून कि 18 जून थी मुझे गेट रु से तो बड़ गेट नाला से कांदी कांदी जाइली आउ बुर्ला एक्सपीरियंस कौन कहबी बुर्ला एक्सपीरियंस कौन कहबी बुर्ला एक्सपीरियंस रे मो बोधे गोटे पिला थी जे रेमेड देखी नथिला ओके किंतु मुझे कहनी ठीक अच्छे आउ सेतबेलठू मो देह खराब थिला आ तापरे भी अनेक थर देह खराब होती आते मोर फ्रेंड मिहिर मुदाली मत रक्त देता तेणु एबे भी से तार संपर्क माने ओके आ मत क्लासमेट माने ही सब मत से हॉस्पिटल बुर्ला पड़ी हेल्प करते आपर लाइफ रे मु अनेक थर देह खराब होती बट भगवान मत बंचई तेणु चलती एनटीपीसी रे जॉइन कर इंफा रे जॉइन करी जस्ट पास कर नेक्स्ट दिन इंफा रे जॉइन करी इंफारू पुणी छाड़ी गोटे मिछ आप्लिकेसन लिखी तापर एनटीपीसी गली एनटीपीसी रे अच्छी तो अच्छी 25 वर्ष धरी अच्छी आ मझिरे एमडीआई गुरगाँव फुल टाइम एमबीए भी करदे आपर मोर ओडिया साहित्य उपरे बहुत ये अच्छी माने मु पाठक गोटे लिखेनी पाठक गोटे तेणु बहुत सुन कथा शुणिली जब लिखुं आ विजय तो लिखे विजय ऑफकोर्स लिखे तेणु मु समस्त जी भाई किए लिखुच भाई मत कह मुझे पढ़ापढ़ी करी आउ रहा मो फैमिली फ्रंट रे मोर गोटे पुअर चित्रटा देखाईनी ओके से 11th क्लास से मु बर्तमान नोएडा रे अच्छी आ झीटा एसकेजी रे पढ़ुची ओके थैंक यू थैंक यू हाँ कहे हाँ सर अच्छा स्टार्ट नमस्कार स्टार्ट करने पूर्व मत कही सर्ट होगा पड़ो 2-3टा पॉइंट मुझे डेफिनेटली कहि फर्स्ट है कुडोज टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन जिते सब पेन नहीं से कर लिटिल बिट पेनफुल कि यही अवस्था आसला पर भी फाइनेंशियल ट्रमा लिटिल बिट अच्छी सम शॉर्टफॉल इज देयर सो वी नीड सम वॉलंटियर्स दोज विल पे लिटिल बिट मोर स्टार्टिंग विथ मी व्हाट वी डू डिड 5000 वाज 1 यूनिट so we will pay one unit more. If somebody is interested for 2 units, 3 units, that we can do. I started, just you can note down, so that we will pay 1 unit more. So that shortfall will be now taken care of. এটা হয়ে গেল অর্গানাইজেশন বিষয়ে মো বিষয়ে বহুত কিছু মু কহিବାକୁ চাহুনি ওকে আই ওয়েন্ট দেয়ার অল দিস থিংস সেথর কিছু কাউ কিছু মিলিবনি only one thing I just wish ki one word my life journey till now is just even one word, it is accelerating, and I wish everybody should have that. What I have achieved कि कौन पर अचीव करिया को जाउची I wish everybody, every single person of 89 batch Burla should have at least that, or should have more than, but much better than that. With that wish I think I should conclude. My wife's name is Goody and I am blessed with 2 sons, Swaraj and Samrit. Unfortunately Swaraj's photo is not there, he is in 11th standard, and Samrit is 1st standard. I think with this I will conclude. Right now I am in Indian Revenue Service, posted in Bombay as Additional Commission Income Tax. Few friends they gave me opportunity कि आसला पर टिंके तंको hosting करिया पे, including Pratap, Prabhu. So I wish जी आसिया कथा I will have the opportunity of to just extend my hospitality to you. So far as Raju Mehri is concerned, ete समस्ती डाकी next week I am going there. So let me see कि can the hospitality भला है ना, everybody will go there. Dehradun is a nice place. Most of you can go. Okay. I think thank you. Okay. Bye. Saroj is always inspirational. ये जो आम ऑर्गेनाइज कले सरोज सब बड़े पचार रही कि हमको फोन में कांटेक्ट करके सब बड़े इंस्पायर करचंती एंड राइटली ही हैज बीन नॉर्मली नेगेटिव कहिबी ने एते इंस्पिरेशनल पर भी दिस ऑर्गेनाइजिंग कमिटी हैज किक्ड मी इन द बैक मो ना बिल्कुल नहीं को फटोड़ा भी सोडा उडा कर दे छंदी किंतु एंड आई एम हैप्पी विथ दैट प्रताप गला सरोज रो ना कठी इट इज ओके आउ के हेले बवाल करबे यार चलिबो ताले माने सेइतरे सरोज बुझा कथा हाउ मच कॉन्फिडेंस वी हैव विथ हिम. So nice. सरोज भाया आउ जदि 20-25टा पिला हेबे ताले वर्ष को थरे बेले 2-3 थर गेट टुगेदर हो पारो किछ असुविधा नहीं. थैंक्स टू सरोज. शत्रुघ्न बेहरा
He is a friend who sits always with us while we are planning for this get together. Yeah. प्रच्छद पटरे मुख्य लोक सी मु एनटीपीसी रे सर्विस करची फास्ट दिन मुझे जो बुर्ला जॉइन कली आमको कहगला कि लाइन ने ठिया कि खाइबा नेबा को गला बेलू को 4टा पूरी आउ टिके आलू दम दौले से मुझे कहली किए बे कही देवा टिके टिके ना सुपरिटेडेंट मुझे कहली किए बे से सुपरिटेडेंट से जो आसिकी खाऊची डिके आसीगले किए कहला हु इज दैट फेलो कहीकि जहाँ गाड़ी कला फास्ट एक्सपीरियंस दिस मो टाइम नेबिनी मु एनटीपीसी सर्विस करछि बर्तमान चेन्नई रे अछि आई ब्लेस्ड विथ 2 sons my elder son is reading in 9th standard and younger son is studying in 6th standard in KV Bhubaneswar. Thank you guys. Thank you for your brief note. Next we want to invite Sudhanshu Shekhar Sahu. नाचिकी स्टेज फटेवा लोक आज राति देखा जाऊ कौन कर हेलो बुर्लारू पास कर सारा 2 वर्ष खंड बुलिली तापर ओमफेड चाकरी कली ओमफेड चाकला पीएससी पाई अवश्य 2टा पब्लिक सेक्टर पाई मेडिकल ग्राउंड कटिगली तापर पीएससी पाई सारा चाकरी कली वुमेन्स पॉलिटिकल पाठ पढ़ेगा आ केमी पढ़ेबी निजे तो पढ़ी ना के पाठ पढ़ेबी के तापर फिर भाविली कौन केमी करवा मुझे आमर एवं जन प्रोफेसर अच्छा जोटा कि ना कहूनी से बही देखिए पढ़ू गोटा असंभव कथा आ बही देखिए पढ़ेबे आज न पढ़े पार निजे कन्फ्यूज पिला कन्फ्यूज कर दियो बस से प्रिंसिपाल अप्लाई कली मु कहली सबुठ टीचर हवाटा हूँ सबुठार बेस्ट सबुठार सहज काम है टीचर किसी पढ़ा दरकार नहीं पिला पढ़ा दरकार नहीं आजकल तो नेट कह ये सैड जा यहाँ पढ़ पिला निजे पढ़ुंट मुझे बढ़िया यहाँ बढ़िया जब चुपचाप बस जाऊ मो जीवन सब किसी पाई जाइए मोर ऑफिशियली गोटे स्त्री आउ गोटे पुओ अनअफिशियल कथा मुझे कहूनी आना वुमेन्स पॉलिटिक्स जो चाकरी करी सब थिला तेणु आउ गोटे कथा कहूँ बहुत जीवन में मस्ती करी प्रत्येक दिन हूँ बुर्लार गोटे माने मोर एक्सपीरियंस किसी कह दरकार नहीं गोटे गीत गाईदे ये हो कमेडी किसी खराब नुह आ बहुत किसी अच्छी रागुच मुझे किसी होनी मतलब मुत तो माड़िलाणी परदा दियो टाणी मुत तो माड़िलाणी केलु महापात्र कौन कहले तू धीरे धीरे मूर्ति पका तू आस्ते आस्ते मूर्ति पका आस्ते आस्ते मूर्ति पका सब आम जो संगीता पाणिग्राही नाचुले कहले असंभाल हेलाणी मो असंभाल हेलाणी मो ठोपे पड़ी गलाणी मुत तो माड़िलाणी मुत तो माड़िलाणी भाई एते बेले तो सारी देले संध्या बेल को पुणी बाकी रही ना टिके दबे की रखी था नेक्स्ट इज सुशांत जेना इज रियली एंथुजियास्टिक फ्रेंड काली राति आम बस रे आसला बेलू को एते एक्साइटेड थे मत बहुत खुशी लगिला Hello friends, it is very nice to see all of you today. Had it been more attendance, it would have been very nice. We are expecting 100 plus despite our all efforts through WhatsApp, email, mobile and Facebook. All people have tried their level best. However, we are happy that this much turnout could happen. 89 रे पास आउट कला परे मु प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट इंडिया रे किछि 6 मास पर्यंत थिली तापरे ओएनजीसी रो कॉल आसिला परे मु ओएनजीसी जॉइन करी गली and from 90 onwards till now I am in ONGC. During the tenure of ONGC I have served in Surat,
It is a mega gas processing plant. There I stayed about 13 years. Then I moved to Assam. I stayed in Assam 3 years. In our service period, generally Northeast tenure of 3 years is to be completed. So I have completed that one. After completing that period, I got posted to Ahmedabad. Right now I am at Ahmedabad. From 2009 till now I am there. I am in Ahmedabad asset. Delhi production is around 3,500 metric ton. And I am looking after one production installations which is connected with around 67 production wells. And being a mechanical engineer and oil producing is a very difficult and different view. It has nothing to do with mechanical engineering, but it is totally a different field. However, that organization, though it has given me bread and butter, so I have in the process I have learned how it is to be done. And my installation under my leadership, it is Delhi contributing 350 metric tons per day. And during this tenure, I have been promoted to E5. And I hope my E6 promotion will be coming shortly. And from family front, I am blessed with one daughter and one son. Daughter name is Priyanka and son is Anmol. And my wife is Anugya. My daughter, last year she completed her 12th class and she could score 95% in CBSE board. And last year she got admitted to first year MBBS. And Master Anmol is studying in class 4. From family front, I am very happy. And during UCE career, my roommate and my dearest friend Karan has already told, so I have nothing left to share with you. And with this stay, I enjoyed a lot. And the moment I got the information that this year we are going to hold this Silver Jubilee function, I was so excited and contacted with as many people as I can. I got, luckily I got from the Facebook that what file. In that file, many numbers were written. So that was my tool with which I could contact with many people. Now I hope that I will be getting at least all people at my hand itself, because it is the mobile which will help me to keep in contact with my friends. So it is very nice. Thank you. Thank you, Susan. Now I would like to request Tara Shankar Dalai. No, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି तारा भाई मध्य काल रात आम सहित बस रे आसुले वी हैव एंजॉयड किंतु टे जल्दी सोई पड़ले Good evening, everybody. 89 Bularo passed out hela pare straight away I joined ONGC and still continuing with ONGC only. So presently I am Chief Engineer Mechanical in the drilling services for which the ONGC is meant for. Basically, profession wise, regarding my family front, first of all tell you my family, and that's my happy and healthy family. You can see the photos there. I blessed with one wife, one daughter and one son. Son is the eldest one. He is in 11th standard now. Okay, so ready to take the question, not issue. Let me finish my. Okay. So my son is Arpan. He is studying in class 11th. Doing well. He did top in the 10th class, scoring 97% with a 10 CGPA. And he is very good in singing songs
particularly the Odia songs. Now he now learns, he knows how to write and read the Odia, because we all speak Odia in house. And also he is very good playing the harmonium. हाँ ओके हाँ से हारमोनियम बहुत बढ़िया बजाए एंड गीत भी भल बोले एक्चुअली झील मोर यू कैन सी ता फोटो देखिए सी एक्चुअली वन ऑफ द ओडिसी एक्सपोनेंट डांसर ओडिसी डांसर से बॉम्बे रे से विभिन्न जगह भी से पार्टिसिपेट करे ओडिसी डांस रे ता ना होची तनुश्री क्लास 6 रे से पढ़ुची वाइफ आगु जॉब करथला बिफोर मैरिज she is MSc in math first class, then she did B.Ed and also diploma in computer application. किंतु जॉब करथला बागर पर she wanted to be a good housewife, so now she is continuing as a good housewife. ये हला family front, so I am blessed with this happy and healthy family. No problem. Best I can say, not better, even I can say the best. If you have corrected me, it is the best one. आउ समस्त समकता कहले यूसी एक्सपीरियंस विषय रे रियली सेट आउट दैट 4 years जर्नी वाज रियली मेमोरेबल आई कैन नॉट फॉरगेट दैट आई वाज रियली एक्साइटेड जेतले मु सुनिली बहुत कुछ हेतला माने कोन तो कहबो सब इंसिडेंट किंतु मु रियली आई रियली प्राउड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ व्हिच यू ऑल आर हियर टुडे वी आर रीजन टू दिस लेवल एक्चुअली घरे सब मतलब शुणिली आम गेट टुगेदर हो मो झील सब कहे बापा तो बहुत खुश अच्छे ना बहुत एक्साइटेड अच्छे ना कारण तो सांग भेट कर आज मत से आज फोन कर कहला बाबा तुम कौन सांग भेट गलानी सो कौन तो सांग मैंने कहते चिन्ह पार्च ना नहीं एंड रियली काली मुझे आज पहुँचली भुवनेश्वर रियली इट वाज इमोशनल देखिली मोर फ्रेंड्स मान को आफ्टर 25 years केत को चिन्ह भी पारे बट इट एत मत खुशी लगुला जहाँ हो कि 25 years पर अगेन वी आर टुगेदर विथ माय ओल्ड 4 years फ्रेंड्स आउ आज जहाँ हुए कॉलेज गसला पर अगेन आई फेल्ट सो इमोशनल बिकॉज यही कॉलेज में पास करके जाइछु आउ बेटे इच्छा है मुझे सरजू मुझे कहली चलते पहले प्रथम जाइए बुले दी आसवा कॉलेजटा जो कॉलेज में पाठ पढ़ुते 4 वर्ष सब सका उठिकी दौड़ुले आईटे बुले देके आसलु सी ये है बेसिकली आउ कौन कहि थैंक यू वेरी मच आउ ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने ये ऑर्गेनाइज कर प्रताप और आमर ये विनय आउ स्मरण आउ अन्य मैंने जी रही आमर अविनाश भाई सब जो अच्छा अथर एंड प्रभास ऑल्सो आई प्रभास बहुत लास्ट मोमेंट एफर्ट कर सुशांत भी बहुत एफर्ट करुला थ्रू व्हाट्सएप एनी हाउ to all organizers it's a big clap I can say you can give all a big clap to them so we looking forward to better out भल केमती टिके आउ समझ भल बेसिकली इट इज ऑल अ माइंड सेट बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आसबनी बिकॉज 25 years to get together एटा गोटे रियली लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आई कैन से समस्त अटेंड करते बहुत भल होता था एनी हाउ जो अटेंड कर डेफिनेटली वी आर ऑल हैप्पी थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो द लास्ट पर्सन इज रमेश चंद्र माझी ओ इज एब्सेंट सो हो जाइए ओके आउ जदि को सांग को मु छाड़ी देछि बा लिस्ट ना नहीं ज्योति इज एब्सेंट so as per schedule we have completed this self introductory session. Now this session with interaction with final year student of this institute will begin. So I request our friends Athar Sahab, Vijay Manti, arrangement chairs please be put here. नहीं के पिला थे विजय महांती, सरोज महापात्र, देवाशीष महापात्र, रमा दास, रमाकांत दास, रमाकांत पाणिग्राही, देवाशीष रथ, प्रभास विश्वाल, प्रशांत मिश्र and Prasanna Kumar Panda. Yes, I have already requested our friends, anybody who want to give some advice can give some light to the
अच्छा मु गोटे कथा कहबी लाइट टिके ऑफ कर दबा कि कारण फाइनल ईयर स्टूडेंट सब सीटी बसचंते अनेबल टू सी देम या we have got a very good panel of friends who are in topmost positions. Bidika bhai, asunanti, asuntu, please come. So, I request Pulak to our event management head, Pulak bhai, to carry forward this session. अच्छा भाई सांग मान को मु रिक्वेस्ट करी ए सेशन रे चलिबो या परे गोटे इम्पोर्टेंट शॉर्ट सेशन टा अछि देन विल ब्रेक अप ओके जदि या भीतर के जदि बाहर को भी जाउचंती जाय के टिके सेशन परे परे पुनी बैक करिवे टिके So first of all, apologies for keeping you waiting. You guys came earlier, but unfortunately our previous session got somewhat delayed. Let me quickly introduce the panel here, and you have a mix of people who are in various industries. Anando Pujari is now doing supply chain consulting with HCL, Hewlett Packard, HP, and a big team reporting to him. Soumya, can you briefly introduce yourself? I forgot your current employment. Presently, I am the Dean Academics in Centurion University. I am Vijay Mohanty. I am in the government. I am a civil servant. I am the Accountant General now, posted in Chhattisgarh. I don't think people have heard what song. I repeat myself. I am SD Patnaik. I look after power evacuation. When there is a power generation, then you evacuate of a company called as Lanco Infratech. Hi guys, my name is Debashish Mahapatra. I am currently working with PricewaterhouseCoopers, which is one of the big 4 management consulting firms in the world. I am into business advisory consulting, mostly limited to the areas in power and utilities domain, and also in the horizontal lines of services, I focus on the business performance improvement and organization change management. Hi guys, myself Devashish Rath. I was with NTPC. Subsequently, I worked with Lanco Infratech. Now I am with BHEL. Good evening, friends. I am PK Panda, basically a civil engineer and with MBA. Presently, I am working with Adani Group as Assistant Vice President. Thank you. Good evening, friends. I am Prabhas Biswal. I am basically mechanical engineer with MBA. Presently, I am working with a power generating company, DB Power. It's a Doning Bhaskar Group company as Assistant Vice President in Techno-Commercial Department that relates to technical specification, procurement and contracting. Good evening, I am GC Bidika. I am into Indian Telecom Service. I had BSNL Odisha Telecom project in Odisha. Good evening, friends. I am Mishra, PK Mishra, and I work in Vizag Steel as a Deputy General Manager. Thank you. Nice to have you here. Thank you, Prashant. And my name is Athar Shahab, and I am CEO Infrastructure and Real Estate with the Vedanta Group. I had the good fortune of addressing a lot of you, and I also answered during that session a lot of questions. So you have a very eminent panel of people, alumni, and we could probably bring everybody here, but for the sake of quick and efficient discussion, we have assembled this a bunch of people, and you can see from academicians to government officials to people occupying positions in industry, consulting, they're all here. So why don't you start shooting your questions? They have a mic. When you speak, please say your name
please say your discipline, from where you are from which discipline you are from, and which of these panelists you want the specific question to be targeted. If you want any particular industry, or or if it is a general question, then we will take it and somebody can answer as it is. Myself Kunalpati, I am from production engineering branch. My question is to Athar sir. Sir, in our college, as you know, now the campus, there is a lot of campus problem now. So, also there is a problem in our training and placement cell. So, means you are the CEO of Vedant. One of the businesses in Vedanta. Sir, yes. so what is your advice about that? How to improve that? See, even last time when I came, I had a meeting with your head of training and placement, and thereafter some students approached me and they wanted to visit our facilities in Jharsuguda. I have promised to the head of training and placement, the one who has left, and there is a new person who has joined. I met him briefly even today, and during my speech in the morning, I told the Vice Chancellor that I, on behalf of the Vedanta Group, I am very happy to connect the staff and the students with whatever we can do. And we can create internship opportunities. We can allow you to visit our facilities and learn from whatever we have to offer. And the good news is that we have a lot of investments in Odisha state. And I was sharing with some people, Vedanta has made investments of about 50,000 crore in creating world's largest alumina refinery in Lanjigad, very substantial investment in aluminium smelting facilities, and 3,600 megawatt of power capacity in Jharsuguda. So there is a lot to go and learn, and I'm very happy to connect. My only request is that don't make sporadic attempts by approaching me directly or individually. It has to be done properly through a system, and in the last instance, I had connected the gentleman concerned with the head of HR in Jharsuguda, and I'm sure things have rolled out, although I didn't get to hear a feedback whether it went well or when is it happening. I hope it worked out quite well. But whenever you have something to do with Vedanta Group, please feel free to contact me. And Vedanta is not about only aluminium, which is in Jharsuguda. It's also about copper, which is in Sterlite Copper in Tuticorin. We have a very large zinc establishment out of Rajasthan in Hindustan Zinc. And we also own Cairn India, which is oil and gas company. So any part of Vedanta Group, I think if you have anything, I am happy to connect all of you through your training and placement department. Sir, is it possible that if we are going through the proper procedure, then this year Vedant can come for a campus drive? Vedanta has come to this campus before and recruited people, and I have already registered my interest in getting Vedanta back to the campus. But as you know, the entire country is going through a downturn, and we are all waiting to see when we can begin big time hiring. As we speak, 2-3 of our businesses are really facing big challenges. Supreme Court banned the iron ore mining. We are the largest miner of iron ore, and we have hundreds of engineers who are not doing anything for 3 years. We also have this big investment in aluminium, which is not doing well because we didn't get the bauxite mines. So there are challenges. We are all hoping that it will get resolved in the next 6 to 9 months under the new dispensation. As and when things start looking up, you will see Vedanta coming back to not only this campus, big time in multiple other campuses as well. Good evening, everyone. Sir, I'm Saugan Karan from Production Engineering Department. Presently, I'm the placement coordinator representing production engineering. Sir, I would like to share a problem which we usually have working at the training placement cell. Sir, our college changed its name from UCE to VSSUT Burla. It's a government institute. So the biggest problem is that we are unable to advertise our college. Now, in advertise, I mean is that it should reach to the people that this is one of the oldest colleges. It is VSSUT. It has changed from UCE. We can't go for newspapers. We can't go for media because it's a government institution. So, sir, what can we do so that we can actually, like, I want suggestions that what we, the TNP cell presently, can do so that we can at least spread the name of VSSUT among the masses.
best way to spread the name of, please have a seat. The best way to spread the name of any institute, not only this institute, is through first and easiest way is to through its own alumni. Okay. So before you ask the question how we should take it up, I must ask the question, throw the question back to your court and saying that what is the training and placement department of this institute has done in reaching out to the alumni who are placed so widely and so important places. Now that is the first tick that has to be done. If you have done that, then the onus lies on the alumni in terms of doing their own contributions. Okay, that's the easiest channel that that has to be established. The second channel is there is some effort that has to be done by your institute also, the training and placement department, in reaching out proactively to those organizations which you target. Okay, now there are many organizations which do not consider you to be in the same league as the other good important institutes from where they recruit the campus, recruit through campus. Now it doesn't mean that you are bad students. When you, in fact, like when you land off in a corporate job, you will find that maybe you surpass in terms of your talent compared to somebody who comes from a better institute. Okay, but by that time, the time is already gone. That opportunity is already gone, because the first impression that has been created in the minds of those kind of organizations is that this institute is not good. So fundamentally, what you have to do is your training and placement. It's like a simple way. You have to market yourself. How do you market yourself is something that you have to think of. Whether you want to showcase your infrastructure, whether you want to showcase your students, whether you want to showcase your faculty, whatever way, it has to be packaged, and then you have to go to the respective organizations in selling your talent. So I have two channels with me. One is through your alumni, one is directly reaching out. If my colleagues here can offer any other thing, they can say. Somebody, you mentioned about it's being a government institution. I work in the government. See, to my mind, there is no bar on advertising your college being a government institution. It's the only thing that you have to procure some funds for advertisement. And I think many people do, many institutions, government institutions do it in a different way. What they do is like they get sponsorships from alumni, from other institutions, from organized through events. Okay, and then the government has nothing to say about it. And Debashish mentioned very important thing, how you promote your institute. We just roamed around the campus. We passed out after 25 years also. The campus looks just the same. What will we improve? You don't have a good toilet over here. We're not able to go there. I'm not blaming anybody, but that's the point. See, before you do it, before you even try kind of projecting yourself, you must improve your infrastructure. Then you must have a very good website. That is the best thing now. I've seen your website. It's not very flattering in the sense that you have to list out all the people, your profile of the professors, then who are the people who are like, people are sitting here, many people, and there are old passed out students from this institute who are in very good positions. You have to kind of list it out, and then you try reaching out to different organizations for your placements. So that you have to do. And then you have to somehow pressurize your authorities to get the infrastructure right. That's a must. These cushion seats over here have not been changed in 25 years. And when we were there, this was the best auditorium. Now this could be one of the, I don't know. So that way, you have to do that. I want to add something because I have conducted one campus interview here in year 2011. So at that time, we have faced a lot of problem. Right now, we have visited the campus, so nothing much has changed as far as infrastructure is concerned and as far as the availability of your system and everything in the placement division is concerned. Rightly, other speaker pointed out things need to improve from the VSSUT point of view also. We alumni are there definitely. Whenever we got a call from VC or whoever it may be, we try to see that if it is possible or not. Because in India there are a number of colleges, so generally management say why to VSSUT, why not to other? Question generally comes. So we take a lot of pain to explain why not VSSUT. So there should be sufficient infrastructure and other things built up to show that okay, this is a college from which we can take the best talent. Okay. Just to add to that, I must say that congratulate you. You people are intelligent. Campus is not end of the world, and there are n number of opportunities.
The entire economy will be changing and changing very soon. There will be a lot of demand. You will get ample number of jobs. Only thing is that you need to believe in yourself. So that's all. With that you can achieve anything, because I know what UCE is. I know how you have got through to come over this. That's all. You must have believe in yourself that you can do it. I'm sure that you'll do it. Thank you. Thank you, sir. Sir, just to add to that, I mean, thank you for your suggestions. It really helped. But sir, I would just like to know the specific platform which you would mention us. Let me just answer the specific how part of it. I do not think till date there has been a very concerted effort on the part of the organization to formally write a letter to all prospective employees in the country. You know, we have also had the benefit of finding higher education in some other colleges. For example, I went to XLRI, Devashish went to XIM, and a lot of other colleagues have gone to XIM. And other people have done MTech from other colleges. I can tell you the training and placement division of XLRI is so active. They are constantly in touch with the alumni who are in key positions. They constantly communicate. So I get to know what's happening in XLRI, and they draw me into all kinds of things. So there is communication over email, there is written communication, and we also know what the alumni of my college are doing. Unfortunately, you don't know sitting in this college what your alumni are doing. So your alumni are your biggest advertisement. If a prospective employer gets to know that people from your college are occupying high positions in government, in private sector, in multinational companies, there are so many people abroad, you know, it creates a different impression. But a new recruiter who has, let's say, done his master's in HR, and he is asked by his boss to shortlist colleges, he will apply some criteria very blindly. He will say infrastructure, poor. Research coming out of the college, poor. Air connectivity, bad. You know, then you obviously are getting down to tier 2 and tier 3. There is a need to invest in infrastructure, as colleagues are saying. Whenever we come here, we have been pointing this out to your management. I don't think there's any dearth of funds, but clearly more needs to be done in improving the infrastructure, particularly the IT infrastructure or general cleanliness and other stuff. But as Devashish was pointing out, there is also a need to do marketing. Every magazine or platform, they constantly rate and rank educational institutions. What is the effort that you are making as training and placement team? And I can tell you, it's not only the faculty that has to make the effort. In places like XLRI, it's people like yourselves who are apart from studies, and I can tell you management studies are 10 times harder than what you're doing here. So despite that very difficult schedule, they try and get to the crux of the issue by preparing hard-hitting marketing brochures, by participating in ranking exercises, by communicating to the rating agencies that our institute is top-notch in infrastructure, quality of faculty, research, blah, 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 whatever it takes to get there. So I think there is a need to do introspection. Fortunately, you live in an electronic age, so it doesn't cost you anything to prepare a nice electronic brochure and reach out and mail it, and then participate in all these online rankings and be in constant touch. What we have done today is we have left a very useful database with your people. So reach out, and I'm not saying it's only 89 batch, which has done great stuff. You have so many batches and so many people. We don't even know them, so we are trying to collect a lot of them in various chapters, and some of us will be very active in alumni matters in times to come. But the focal point is the college. You should have the database, you should be reaching out, and every batch that comes in, you know, in our times, we used to take pride in running the mess or running the audiovisual club. In your time, it is the people who are running the training and placement function. So use all the tools of technology. You know, you guys are masters of it. But make good use of it, connect the alumni, connect with people who are rating and evaluating your college, and present a good picture. But just presenting a good picture will not help till the time the management is committed and is putting real resources in improving the infrastructure, for which the alumni will continue to work with your management. What must have happened is UCE is a very old college in Orissa, and whatever reputation we had, you know, over a period of, I think it started in 1956 or, yeah, and you know, whatever reputation we had over a period of time, with a name change, it become, you know, VSSUT. Then what happens, whatever reputation was there, everybody knew about UCE, but they don't know about the new institution. It becomes more challenging now to you
to market. I think so. What you should do is you have to actually put more efforts now. If it was UCE, I don't think you would be struggling to market your institute. So now, as our colleagues have told, you have to do aggressive marketing. That's the only way to reach out. And alumni is the only, easier way to reach out to the people. Okay? So you have a disadvantaged position now, and we to do aggressive marketing. Sir, approximately last year, it was quite few, sir. To be really frank, it was around 7, 8 companies. Have you ever asked your training placement? Who is your training placement in charge? Sir, his Dr. Prashant Nanda, sir. Dr. Prashant Nanda. Do you have a forum where you discuss these things? Yes, sir. Like every day we come to the training placement, so all the coordinators we assemble, we decide what to do, we keep sending mails. Don't you ask them this same question? Why companies are not coming to our college? Sir, I don't know about the last year, but this year we have got some good responses from the companies. Then how it came through? Actually, how it became possible that this year you have got some good? Sir, this year we had started working quite early. We started working from July. Yes, that is the point. Sir, I do agree that yes, we need to work hard. Our alumni are doing a great job. We need to work hard. So that's what I was asking, that what should we do? You people have been doing really great work, because I am here in the last 4 years. Last thing you must have a regular interaction with your training placement department. You should have forum amongst yourselves. I think every department must be. We didn't have those kind of things in our days. Yes. But these days, I think you must be having this kind of forums in each of your faculty. Okay, and you must meet your training department HOD जो भी है उन लोगों से मिलना चाहिए आप लोगों को. Then you must discuss these things, and you must, like everybody in the panel say, you must learn how to actually market our college. You means you and we together, because it is our responsibility. Yeah. Are you holding some kind of an event in Burla College or VSSUT where you're inviting, let's say, the top CEOs who are operating in Orissa? Is there a big technical seminar or something of great significance happening in this state? We want to be the leading light in engineering, research and all that, as VC was saying. Yeah. Those kind of technical institutions where placements have picked up or are in kind of in a relatively better, what they normally do is, it is not that they always go out and market themselves. The marketing can be done sitting here also, and taking a cue from what Athar is saying. It's not that you only do technical seminars here, okay, where technical papers are discussed. Technical papers are normally to be discussed in engineering college. Nobody, discounts that. But with the same, you need to modulate those kind of seminars in such a way that you have people from the industry who are sitting and operating businesses and taking business decisions. See, when you go out in the industry, it is, nobody actually sees at that level, but at, at this level, they make the decisions about recruitment and further business expansion. So whenever you are having these kind of seminars here, please ensure that you have a mix of both technical as well as, the business aspects, so that people who are representing the business are also participating in that, and then you are able to interact with them more. You can network with them more, and then you can market yourself while sitting here. Okay, so that's one. Whatever the panel has said is perfectly correct, in the sense there is an issue of infrastructure, there is an issue of something else.
But then we are talking to a bunch of people who are there in the fang end of their classes. Their placements are somewhere in 2-3 months down the line. Now, this poor guys cannot improve the infrastructure overnight, not possible. They cannot have kind of very big kind of seminars for the people to come in. But I completely agree to what Athar has said. Now, in this last stage, because you people are very IT-wise, were pretty much much more knowledgeable than us. What Athar has said, in this last stage, please increase your, apart from your coordinators, please take out somewhere around 30-40 people. Concentrate on communicating with the alumni. Because that's, at this stage, maybe that will be the best answer. That's my view, maybe. I have another suggestion. As you know, all the PSUs you are taking from GATE score. So please appear GATE in the month of February and do a better score. Many jobs already have advertised for different PSUs. They only take GATE, validate GATE scores. So you must go through the GATE scores. And in addition to that, people should come out of that campus interviews. Outside the campus is not the end of your life. You can go for the government jobs. There are many government jobs like engineering service. You see there are 2 friends of our batch have got engineering service. There are also civil services. You must not only go for these campus jobs. You must have some study for the there are many government jobs. Okay. And as you know, 13 lakhs engineering graduates every year in India comes out. And job is only 3 lakhs. If you go through the studies, 3 lakhs jobs, 13 lakh students. You see where you are. Okay. So that is the statistics as of now. So you only not only depend on the campus jobs, campus placements. That is good you are getting, but you should go beyond that. You also can go for the MBA. If you are going for the MBA, go for CAT, GRE. So these things, GMAT, those also you should apply. The environment should come in the student sphere. Okay, that will enhance your capabilities and confidence. They can say it, how big it is. Sir, as you said that the placement department, we have been saying our alumni every time that we need a center in Bhubaneswar so that we can have better communication, because many of the companies have been declining for coming to this interior place, Burla. Sir, secondly, present situation in our department, training placement department, we have 2 rooms where one is for the assistant who is working at the training placement cell, and another is a chamber where total 8 coordinators, each representing a branch, and 1 head coordinator are present. So we are total 10 members, including the training placement officer. Yes, sir. 9 student coordinators and 1 training placement officer. Only 1. Yes, sir. 1 faculty, sir. Prashant, you want to respond to this and add to this, please? Hello. Prashant Nanda sir, I joined as a professor and TNP head, and 1 office assistant is there. Office assistant for clerical work, and 8 representative or TNP coordinator from each branch. They are represented. And for infrastructure, institute is planning to make another separate building, but till now they is not finalized. That is the information. Actually, I want to add one point. How the things are, rather I say, not improved in last 25 years. When we are interviewed during those days by the professor of the IITs or whatever it may be, the moment we say that we are from UCE, they used never to ask the question. Can you imagine? They ask from which college, we say UCE Burla. Okay, no question.
Now, if you go to IIT Delhi for MTech interview, you say you see no one is knowing. VSSUT तो आप भूल जाइए. So ये जो चीज़ हुआ इसमें थोड़ा सा तो degradation हुआ है. There is a degradation. तो उसको कैसे रोकना है? That we have to think. Can you reach to that status कि one professor by just hearing the name of the UCE say okay, no question. This I myself, my colleagues, those who have joined, those have faced. No question from UCE, no question. And I think you should communicate to the new person who has taken over as head of training and placement. It is a serious marketing exercise. You can't expect people to come and offer you internship opportunities and jobs. And I'm again and again stressing on internship. Please see the statistic coming out of this year's placements in IITs. People who got the biggest job offers are people who trained in those companies. And for some reason, we have left historically kids to fend for themselves. So they have to go and find out, and there is very little focus on internship. So, sir, one thing regarding the enhancement placement, alumni session last semester in September 14th, we have conducted a workshop. no, I'm just trying to complete. I'm just trying to complete a point, Prashant. Just hear me out. So it's a marketing exercise, and that marketing, and I'm again focused on the specifics, what needs to be done. So let's say these kids will prepare a marketing brochure. This marketing brochure can be sent in hard copy form to all the leading CEOs of the country. By the way, mentioning that the name of the college has also changed from, excuse me, Prabhash, can you bear with me please? Informing the CEOs that the name of our esteemed university has changed from UC Burla to VSSUT, or the government has decided to upgrade the status to a technological university, etc., etc. And they're again giving short history, alumni, what are they doing, etc., etc. Second, an email communication. In fact, by email you can reach out to, I don't know, several thousands of employees in this country. And again, I repeat to the CEOs and the head of HR of all those businesses. And then, I would expect the head of training and placement to personally go and meet, personally, at least people who are based in Orissa. So if Vedanta has a large investment in Orissa, I would expect that the head of training and placement would seek out an opportunity. Jharsuguda is not very far off. Go and meet Dr. Rajiv Nayan. He is a very dynamic fellow, head of HR and managing a very big facility there. It should register in his mind. He knows about UC Burla, by the way. But nobody has approached him and tried to sell the new university. Then there is some kind of selling, and he has to have a calendar, he has to achieve. And I think when he writes his scorecard at the end of the year, if he has not been able to place 100% of the output of this college by the end of the year, I don't think it looks very good. Otherwise, we are going back in many ways to what he was saying during our times, and we have seen what happened. Third, I think again message for faculty, and I share a personal anecdote. I was invited by the Alumni Association of IIT Delhi. I have many friends in IIT Delhi who graduated, and they said, what can you contribute, and how can we grow this? And they had big ideas. Obviously, IIT alumni are all over the world, and they can create funds of hundreds of millions of dollars very quickly. I asked them a simple question. I said, you are operating in South Delhi for so many years. What have you done for your immediate vicinity? What impact have you made? And they started looking at each other. And as it turns out, this very major center of learning, which is housed right in the heart of Delhi, has really made very little meaningful contribution to the city of Delhi. So to say that we are a great seat of learning and we have done this and we have done that, and our alumni are in California and Silicon Valley and all that, but they have not done anything at all. And being IIT Delhi, there are so many problems that they have not dealt with, and I think that registered in their mind. I think when you start creating impact to your immediate vicinity, to the place where you're housed, to the district where you're housed, to the state that you're housed, I think people will start respecting you a lot. There's a long journey. What I'm articulating is not something that you can accomplish immediately. There are major challenges, but at least the thought process must start at some level. I think before concluding, we should just discuss a point. What as an alumni we can do for them? Rest I think is already discussed.
practically how these emotions can be converted to deliverables. As an alumni, whether we can meet the training placement officer of VSSUT or what next we can do, that we can enlighten for 2-3 minutes. Then I think we should be winding up this session. I have already said, so why don't we, Prashant? What can alumni do for the students? You have any question? Actually, I think panel they have No, sir, it's amply not. clear. Please, Okay. bole. Please, Sir, I am Divilochan Meher. Okay. Sir, it's not about training and placement, but as we, the people of VSSUT, formerly UCE, we have developed the first quadcopter, the first tricopter, and we are redeveloping, we are innovating. As the robotic society, we are doing work. But sir, the main problem we are facing is with, like, Arthur sir was saying that we don't have any technical, like, USP. Now sir, our first USP, like the most biggest USP, is that we have developed the first quadcopter and tricopter of Orissa. But sir, to participate in various competition, in national level competition, we need, like, for the budget, we have done the budgeting of this Robocon 2015. It's around 6,15,000, and the college is only funding 1,50,000. Sir, the whole money will be gone in the transportation of the bot and our registration only. So sir, how can we do that? Like, if we are dealing with 1 or 1.5 lakhs and we have a budget of 6 lakh without any support, how can we do that? Yes, sir. Yes, sir, we are trying on that. And sir, you told about, sir, that corporate source, like CSR, and we have to connect with the CSR. Sir, we are trying on that. We have approached the Bharatiya Kisan Sangh, and the state president has told us that he will give us a slot to experiment, like the crop monitoring and in the vicinity of this Western Orissa. And sir, they have really liked our project. And sir, thus we are developing, sir, but we need your support and college support also, sir. So on this technological front, we are trying to develop, but we are like, okay, we are trying to develop, but we can't get that push. We need a catalyst, sir. Sir, please, sir. It would be like, we need your help. Thanks. you want, actually, what I understand is you want sponsorship. Help, like technical help, managerial help. From the alumni? Yes, sir. From the alumni, actually, we can promise one thing. We will be talking to. And sir, I have complete listing of what we have done in the robotic society. It would be very nice of you, if kind of you actually, if you can visit our club for around 5 minutes. Actually, I have completely listed out all the. No, that's okay. This is specific case that we are talking about. We are not talking about a specific case, but basically what we are discussing here is the general problem of campuses not coming to, companies not coming, visiting your campus, right? Okay. Yes, sir. Sir, we have prepared only. We will be mailing you shortly, very shortly. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are talking. We are in contact with the Bharatiya Kisan Sangh, which is like a. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay, sir. Oh. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. We just want to.
Excuse me, sir. Myself Manikant Behra. Sir, हम लोग जो करते हैं यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम You are from which branch and which Computer Science and Engineering, third year, sir. Third year. Yes, sir. All of you are from third year? Sir, final year. Final year. Okay. सर जब ये कॉलेज यूसी हुआ करता था तो फिर तब पावर मतलब स्टूडेंट्स के हाथ में था कि एडमिनिस्ट्रेशन भी सब मिल के होता था, कुछ एक अलग था, उन लोगों का एम्बियंस कुछ अलग था. जब VSSUT हुआ सर ऐसा कुछ एम्बियंस कुछ नहीं सर फिर भी थोड़ा था मतलब यूसी का नाम था सर VSSUT. ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଖାସ୍ ସତ କଥାଟା ଯେଉଁ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ. ତୁମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଲା ଏଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା. ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟା ହେଲା ତୁମର ଏଠି ଯିଏ ମାନେ ସତ କଥାଟା କହୁଛି ଯିଏ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପିଲା ସେ ଯଦି କିଟ୍ରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ଏହା ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା. ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସବୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଏପ୍ ଅଛି ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆସିବେ TCS ଆସିବ 500 ପିଲା ନେବ ITRରୁ କ'ଣ 500 ପିଲା ସବୁ ଭଲ ITRରୁ 500-600 କେତେ ପିଲା ଏଥର ନେଇଯାଇଛି. ସେ ତାଙ୍କର ଟାଏପ୍ ହୋଇଛି ଅଛି. ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ଆସିବ କିଛି ନାହିଁ. ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ 50ଟା ଚିଠି ଲେଖିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କର ନିଅ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆସୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି. ହ୍ୱେରାଜ୍ ସେମାନେ କିଟିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ ଏଇଠିକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବୁ. ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ 50ଟା ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ଆପଣ ହିଟାଚି କମ୍ପାନୀ ଚିଠି ଦିଅ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ ଦେଖେଇବେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ଆମର ନେବେ 3ଟା ପିଲା କିଟ୍ରୁ ନେବେ 15ଟା ପିଲା. କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇବୁ? ସିଏ ତାଙ୍କ ହାୟର ଅଥରିଟି ଦେଖେଇବେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲା ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲିକି ପଠେଇଲେ ଆଣିଲୁ କିଟ୍ରୁ 15ଟା ପିଲା. କ'ଣ କିଟ୍ରେ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇବୁ? ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତକ ସବୁ ଟପ୍ ପୋଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି. ତେଣୁ ସେମାନେ ଯିବେ ସେଇ କଲେଜରୁ ଆଣିବେ ନା ଆଣିକି ଆସିବେ ଇଏ ଆମ ବୁର୍ଲାରେ ସିଟ୍ରେ ଏସବୁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା. ତୁମେ ଆଶା କରନି ସବୁବେଳେ ସେଇ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଗେଟ୍ ସ୍କୋର ଆପ୍ଲାଏ କର, ଗେଟ୍ ସ୍କୋର ଦେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କର. ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ JTO ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଲ୍କୋ ଅଛି, ଭେଲ୍ ହାଲ୍ ଏସବୁ ଅଛି. ଡୋଣ୍ଟ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ କରନି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଦାନୀ. ହ୍ୟାଲୋ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସତ କଥା. ଏଇଟା ତେଣୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜେ ଫେସ୍ କରୁଛି. ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି. ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଲମନି ଯେଉଁ ଅଛୁ ୱି ଆର୍ ଟୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଦିସ୍. Sorry, within an house there is bound to be difference of opinion. I completely differ with what Sudhanshu has said. Okay, I don't agree. This is not the way to talk about whether private sector or government sector. Yes, for one thing I agree with him. Your fundamental duty here is to study. Fine. Apart from that, we have reached a world where even from the engineering college also, you have to start marketing yourself. As an individual, as a group. Believe me, we are living in a world where packaging is more important than substance. Okay, substance is fine, but if the overall packaging is not good, nobody will touch the substance. I am not going to the debate why KIT is better than the college that Sudhanshu is in. I'm not, that is a different line altogether. But fundamentally, what I wanted to say is that what collectively we have said, focus on your studies. That's number one. If you don't do that, there is no other way. Number two, please start building up your infrastructure. I that it is not going to be done in the next 3 months or 4 months till you pass out, but maybe in the next 3-4 years. Number two. Yeah. Number three, when I say infrastructure, it means infrastructure for the college, infrastructure for the training and placement department as well. That's number two. Number three, please start preparing your marketing, your packaging well. That is both posing yourself in the external as well as posing yourself in the internal world. By going outward, by bringing people inward. That's the way you are going to slowly build up. I mean, you have posed this question today. We don't have an immediate answer to that now. Okay. And coming back to your specific question, as Vijay has already given you the answer, that there is a lot of avenues to reach out to various people. Maybe you are not aware of it, maybe your faculty is not aware of it, or if your faculty is aware of it, maybe he is under tremendous pressure to complete a certain pedagogical requirement, so he is not able to focus on your specific project.
But if you, I think, give enough material by consulting various people that sir, this is the avenue where we need your support, when the institute can write to getting the funding, I think the things can be done. And the fourth thing is that if it is not the way, then like there has to be some sponsorship that has to be tried out, which I think you are already trying out. Okay, fine. Obviously, I am an alumni of this institute. I passed out in 2001. Now I am an alumni secretary. Personally, any student come, I help them lot. Listen, not for I will say for my things. In 2010, myself Prasant Kumar Pradhan, faculty in mechanical engineering. I am also alumni of the 2001 pass out. And is secretary of the alumni yes. association. In 2010, 9-10 session, mechanical girl students come that HL Sunavada is not allowing the summer training. Okay, TNP is refused. TNP professor refused. At the time, PK was in person. Okay, I will arrange your summer training in HL Sunavada. HOD agreed. HOD told me, Prasant, arrange them. In personal contact, I arranged all girl students for summer training HL Sunavada. 2 girl students come for third year, I think at the time. For summer training Telco, now Tata Motors Jamshedpur. Jamshedpur, Tata Motors that refusing that any summer training other than the IIT. But they have given allowed. I have followed them. I have sent them one application, and they have allowed finally 2 students as a special cases. I have helped them at personal level. Regarding the student side, I am saying last September we have conducted a workshop on behalf of Alumni Association to interact with the industry, local industry as well as the outside the industry. Authors, I was the chief speaker at that time, and 2 professors from IIT, they are giving the lectures. But students from final year registered only 3 to 4 students. Third year and second year student, 500 students, only final year 3 students, sir. That is the, sir. Now final year student, that's my personal experience. Final student, only 3 students have registered. Prasant, sir. Let me, before concluding this session, let me give some suggestions which will help you. I believe perhaps the top IT company like TCS, Infosys, Wipro and Accenture all have already gone to the campus. Am I correct? And might be some students, maybe 300, 400, I don't know what is the number in your college, they have already placed. Right? So others, now these big slots will not come further. If they will come, they will go for pool campus to Bhubaneswar, not to Bulla. They may come in January, February for pool campus to Bhubaneswar, okay, not to your institute. You can participate there by registration to registration. If you are interested for other companies, if I remember well, Prasant remember well, 4 years back, some students take initiative and they have find out who are the alumni on top as he has told, and through the institute, you have to apply through institute, and they contacted these persons and students placed. Perhaps 4 years back, Prasant kebe gote itla eta? Tama ibulare. Maybe I don't remember, for 5 years back, students do like that way because job was a great problem.
and they started very beginning. What you are thinking should start from the month of June, July. Okay, now it is late. Already you are in the month of December. Hardly you have time. So what you can do, and as he rightly told, you must have a proper brochure, hard copy, not soft copy. It should reach to the contact persons, and you can contact the limited person, and at the same time you must be prepared. When company visits your campus, if you will not get a job, if there is zero selection, then you are spoiling your juniors. I don't know whether you have internal training activities inside your campus or not. You have internal activities like conducting mock interviews, GD, PIE, and training placement activity like. Are you doing that? Huh? Not third party, internal. I am asking. In the training department, some previous questions are available. All company questions are available in the website or even anywhere you can get. You have to practice. Unless you practice, do GDs, PIs, directly go to companies and you will not able to tell anything. Okay, that is one of the lacuna in every colleges, not here. Okay, you can practice yourself. You should have internal committees, not outside people. Okay. So with this you can try and reach the. So you go to corporate sector and now pinpoint people and approach them. You can get some jobs through that way. Thank you very much for a very active Sir, participation. Excuse me, I want to mention some few points. Yeah, Rakesh. Yeah. I think let's discuss offline. Yeah, I want to just mention few points, which is very important. Just okay. 2-3 points. Maybe some solutions you may get what students are raising and you are raising. Because I was also very deeply associated with many of the activities, not in the placement, of course. Right. 2-3 suggestions I am giving, which will be more effective to all the problems what you are thinking. I have already given the suggestions in many forums also. One suggestion is, myself Rakesh Mohanty, faculty in Computer Science and Engineering, 1998 batch alumni. Okay, so basically the students, whatever issue they are raising, that is genuine, frankly speaking. I admit that also, because we need to improve the student-faculty interaction, first thing. And everything should be done in a very professional way. Like they have a placement team and all, but the real points which needs to be discussed and taken forward, it should be done. First thing, I will raise one issue, like if you are inviting 1,000 companies, we are sending mail to 1,000 companies, we will get response at least of 100 companies. That should be the goal. Placement should start early. Like when students are in second year, they should start planning their placements ahead. They should put their profiles in the wave and other things like that, what their achievements that are not being highlighted. Most of the time, our medial side and other part is quite dormant. That is not being highlighted. Like many students have achieved many things in national and international level, which is not being highlighted and it is not reaching to the companies. Another important thing is, as you have told, sir, to contact with HRs and CEOs, they should frequently send mails in various occasions also to get a very good rapport with the companies. Not that today alumni meet is conducted and few alumni are coming and I will put the problems before them. I should be always in constant touch. Another thing is, students are not giving importance to that also. There is a faculty team, one faculty member from each department, I guess, in the placement team. Yes? How many meetings have been conducted for them? There is no single meeting throughout the year. Because except the TNP head, there is, whatever I know, as per my knowledge, there is individual faculty members from each department representing to discuss the issues. Rakesh, we have to bring it to a close. Thank you very much for your intervention. I think, this topic is very important and emotional for all of us. Let me conclude by saying a few things. First of all, you are lucky to have people like Rakesh and Prashant sitting here right in your college. I have known them and they are really passionate about your cause. You also have somebody from our batch, Jyotirmay Behera. He is also around making a lot of arrangements. He is also very passionate. 3 people based right here. Then you have a 4th colleague, Ashish Padi, who is Vice President of Alumni Association, equally passionate. All these 4 people, you should use them as a channel to take your issues to the Vice Chancellor. I think, as he was pointing out, people like us will come, we'll say a few nice things, and then we'll go back. We lead very busy lives.
but you have to use the forum, which is the Alumni Association, represented by Rakesh, Prashant, Jyoti, Ashish, to constantly engage A, with the people here, which is your management, and B, all of us sitting here. And I've been very impressed. In very difficult circumstances, they have been doing a lot of work by contacting people and making things happen. I think this discussion has served the purpose that we have been sensitized. I was very sensitized last time when I came. I think today a lot of us have got a much greater sensitivity to your problem. We'll try and respond to your request. We'll try and respond to the request that the Alumni Association makes on us, and collectively we'll try and improve the lot of the college. All the best to you. Thank you. Last request, smile all the time, you will be successful. Hasna chahiye. We see very little of it. Enjoy. Thank you very much. Dear friends, we are running shortage of time. So a very important session should have been taken place by now. That is a business session. So young friends, नहीं पिला रहो Suresh, you can you can go outside and have a chat with all those guys. Okay, please जा निश्चित और तांको सहित इंटरैक्ट करो. भाई भोक कलानी संध्या जलखियाटा सियाडे ठंडा हो गलानी. सो आमे